Okay, fine. So good evening, all the students, and welcome to this particular batch, DWM. Okay, so before we start the subject, I will just introduce you with the subject. What is this subject is all about, and what is the importance of this particular subject? Okay, and why you are studying. Okay, so in database management system, DBMS, you have studied what is database system, what type of architecture database system has, okay, like how to design database, okay, like ER diagram, relational model, then how to query data, okay, and then other stuff related to database management system. So basically what you have studied is like how to store data and how to retrieve data efficiently. It is all about storing and retrieving data, how to query data. Okay, like if failure occurs, then what to do, database, how to recover database, okay, how transaction processing happens. Okay, so that is all about database management system. Okay, but now when it comes to huge amount of data, we want to perform analysis of data. Okay, so in DBMS, you have never studied analysis of data. What you have studied is how to query data, how to store data, okay, and related stuff. So the main purpose of this particular subject is to learn how to perform analysis of data. Okay, so in this particular subject, we can say there are two types of systems we are going to study: data warehouse system and data mining system. The purpose of both the systems is same: analysis of data. Okay, fine. So as far as your syllabus is concerned, there are 6 modules. Out of 6 modules, 5 modules are dedicated to data mining. And in one module, that is module number 1, data warehouse system is introduced. Okay, so we can say like weightage of data warehouse is small as compared to data mining. And there is a reason behind that actually. Okay, fine. So in module number 1, there is concept of data warehouse. What is data warehouse architecture? What is the need for data warehouse? How to design data warehouse schema, star schema, snowflake schema, what are the important operations in data warehouse, OLAP operations, and so on. Okay. Then in module number 2, we have introduction to data mining system. What is data mining system? What kind of architecture data mining system has? Then like what are the basic primitive operations in data mining system? What is data pre-processing before you perform data mining? That is in module number 2. In module number 3, we have classification, which is one of the data mining process, one of the data mining operation. Module number 4 is about clustering, another data mining operation. Module number 5 is about associations, again, one more data mining operation. And finally, in module number 6, we have one advanced concept called web mining, how to perform data mining on web data. Okay, so that is module number 6. Fine. So in this way, there are total 6 modules, out of which module number 1 is introduction to data warehouse, and module number 2 to module number 6, they are on data mining system. Okay, now what is the importance of this particular subject? Okay, nowadays in industry, which are the most like prominent technologies? What are which technologies are more prominent technology wise? Okay, so we can name few like IoT hai, okay, then data analytics hai, blockchain hai, artificial intelligence hai, machine learning hai, data science hai. Now, out of all these terms that I have used, apart from blockchain and IoT, anything else you take, AI pakad lo, machine learning pakad lo, data science pakad lo, okay, fine. Any of these things you consider, the root of all these important terms, the root of all these important technologies is in data warehousing and mining. Okay, so some of you after your graduation must be willing to join industry. Okay, some of you may be placed as data science engineer or machine learning engineer, okay, or business intelligence engineer. Okay, so everywhere you require data warehousing and data mining. Some of you may be planning to pursue your higher study, MS karna hai. So you can do MS in data science.
You can do MS in big data analytics. You can do MS in business intelligence. Again, you require the thorough knowledge of this particular subject. Okay, so whether you consider your future career or you consider your future higher studies, everywhere you will require this particular subject. Okay, so believe me, this particular subject is very important. That is about future. What about your final year? In final year, you will be doing some project. Okay, most of the project nowadays, most of the project, I can say almost 95 to 98% of project you consider, you require some form of muscle intelligence. You require some form of analysis. You require some kind of business intelligence. Okay, so all these concepts are always involved in your final year project. Okay, so there also you will need the basic concepts of data warehousing and data mining. Okay, is this clear? The importance of the subject. Have you understood what is the importance of this particular subject? Okay, now how we will go about this particular subject? Okay, so what we'll be doing is I got a feedback from Vidyalankar classes that it should be not PPT based. Obviously, then we will not go for PPT based. I will use a whiteboard where I'll be explaining the concept. Okay, and I want you to make notes. Notes are very important. Okay, so I will dictate some notes. I will tell you that this particular point is important. Note it down. This particular diagram is important. Draw this diagram. Okay, in data mining, mainly in data mining, we'll also solve numericals, and such numericals will appear in your final exam. Okay, and even if from a particular topic, numerical doesn't appear in this final exam, as I said, the importance of this particular subject is like throughout, in future also. Okay, so we will be solving numericals in this particular subject, mainly in data mining algorithms. Okay, fine. So I want you to be ready with your notes, and whenever I say that, okay, write down this definition or write down the following steps, okay, be ready to note down. And believe me, at the end of the subject, when you will look at your notes, you will be ready with your subject. Okay, you can easily revise the notes which I dictate for your final exam. Okay, that I'm 101% sure. Okay, all the numericals, all the definitions, all the diagrams, all the steps, okay, all these things that you will note down in your copy, this copy will be very, very important for you. Okay, not only clearing your final exam or practical exam or viva, but also for your future reference. Okay, some of my students have this type of copy with them still today. They have already passed out long back. Okay, fine. So are you guys ready with the session now? Can we start? Okay, Hello. during the lecture, yeah, during the class, though whatever technology, whichever platform we use, online platform, there may be some kind of network delay. There may be some kind of like cracking in the noise. Okay, so any difficulty arises, okay, you please let me know immediately that this particular thing humko samajh mein nahi aaya, this particular thing we couldn't hear you properly. Okay, so I will definitely repeat it for you. Okay, fine. And Hello. lecture, again, when I explain particular point, when I explain particular concept, if you are not getting it, अगर कुछ समझने में difficulty हो रही है, तो you can very well interrupt me. Okay, you can tell me कि ये point समझ में नहीं आया. I will again revise that. I will repeat it. Okay, so let's start with the lecture. किसी को अभी कोई doubt है? कुछ पूछना है before we start with the subject? Hello. Yeah. Sir, you were saying something about the notes. My screen was frozen for that time. So can you repeat it, please? Yeah, notes मतलब हम जब when I will explain particular topic, suppose मैंने चालू किया data warehouse architecture. Okay, so I want you to note down the points. कि इसमें इतने components होते हैं, ये component का function ये है. Okay, and then I want you to draw the diagram of that architecture. Okay, so like Vidyalankar will be providing you the notes. They will provide you material. They will provide you EQ, Okay, but I believe strongly that unless until you write down, okay, unless until you during the class you note down, it will be slightly more difficult to just go through the notes and preparing the subject.
यहाँ पे नोट डाउन करोगे, यहाँ पे अपने हाथ से ड्रॉ करोगे, अपने हाथ से डेफिनेशन लिखोगे, अपने हाथ से न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सो इट विल बी मच मच इजियर फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द फाइनल एग्जाम. ओके, तो दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि मैं जब भी बताऊं कि ये लिख लो, ये नोट डाउन कर लो, ओके, यू प्लीज राइट इट डाउन. ओके, और एक चीज मैंने बोली कि अगर कहीं पे कुछ डाउट आता है बीच में जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, when I say it is understood, okay, तो you are like without any hesitation you interrupt me कि मुझे नहीं समझा, I will repeat. Okay guys, can we Okay, start? thank you very much, sir. Yeah, welcome. Okay, so now I will share my screen. We will today start with the first topic, that is module number 1, introduction to data warehouse system. Okay. See, once I किसी ने बोला कि अगर चैट बॉक्स में लिखा तो चलेगा क्या? The problem is once I share my screen, it will be difficult for me to look at the chat box because chat box मुझे दिखेगा नहीं. Okay, एक काम इसमें कर सकता हूँ कि at the end of the session I just open the chat box and I go through all the points, all the queries you have written and I try to address. But better it would be like without any hesitation you tell me कि ये मुझे नहीं समझा. एक बार repeat करोगे क्या? तो I will definitely repeat. Without any hesitation you ask me. Okay, and I'm sure like it will go like very smoothly, don't worry. आपका सब्जेक्ट इतना अच्छे से हो जाएगा, सारे algorithm, सारे methods you will be able to understand properly. Okay, fine. So now I will share my screen. Okay. Okay, just let me know. You all can see the screen, blank white screen. Yes, sir. Okay, fine. So as you can see, it is introduction to data warehouse system. Fine. So what is data warehouse system and why do we need data warehouse system? Okay, so as I said, data warehouse and data mining, both the systems are used for analysis of data. What kind of data? Okay, so data warehouse system is used for analysis of business data. Remember very well, data warehouse system is used for analysis of business data. Okay, so in future, if you want to study big data analytics or business intelligence, then data warehouse will be very much useful too. Okay, fine. So like let us understand how we require data warehouse for business analysis. Okay, so this type of question could be asked in the exam also. Why do you need data warehouse system? Okay, so I will put a title, need for data warehouse system. Okay, so you write down this point. Data warehouse system is used for analysis of business data. Data warehouse system is used for analysis of business data. Okay, now in what sense? How? Consider any organization. Okay, business means any organization. अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको दो चीजें करनी पड़ेगी. पहले बिजनेस चलाना पड़ेगा. You have to run the business. And second thing, you have to monitor the business. Okay, why to run the business? Okay, because हर एक business में there are certain activities which happen day to day. They are called day to day business activities. Okay, day to day business activities से क्या होता है? Business run होता है. Okay, now say for example any particular manufacturing industry. Okay, तो कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो. Daily some raw material comes. Okay, daily some products are manufactured. Daily some products are sold. Daily accounts are settled. Bills are generated. Invoices are generated. Salaries are calculated. Okay, and so on. All these activities are called day-to-day business activities. ये सारी एक्टिविटीज से क्या होता है? ये सारी एक्टिविटीज से बिजनेस रन होता है. Okay, but more important is what? You have to monitor the business. अभी मॉनिटर करना मतलब क्या? बिजनेस कैसे चल रहा है वो देखना पड़ेगा. ओके, लाइक अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है, ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन.
कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव द बिजनेस। अगर कोई बिजनेस कहीं कहीं पे लाइक आपका कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छे से चल रहा है, तो देन यू ट्राई टू फर्दर इम्प्रूव इट, कि और अच्छा क्या कर सकते हैं, ओके, सो दैट कस्टमर्स विल बी मोर डिलाइटेड। Okay, so you have to continuously monitor the business. Okay, like you might have seen many times in like even in newspaper, like big companies like Amazon and Zomato, and they all announce like merging करते हैं वो लोग। ओके, ये कंपनी ने ये छोटी कंपनी को बाय कर लिया, ओके, या मर्जर किया। ओके, दैट इज वेरी बिग डिसीजन। इवन समटाइम्स यू फाइंड लाइक अभी सेल लगा है, 50% सेल लगा है, ये प्रोडक्ट पे ये प्रोडक्ट फ्री है। तो ये सब कैसे आता है, हाउ हाउ डू दे डिसाइड, ओके, हाउ डू दे डिसाइड कि ये प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट फ्री में देना चाहिए तो भी हमको प्रॉफिट होगा। दे आर नॉट रनिंग इन लॉस, रिमेंबर, whenever they announce this type of schemes, they are not running in loss, remember that. So ये सब कैसे होता है, तो they perform in-depth analysis so that more and more customers will be attracted to purchase and their business will grow. So that is called monitoring the business. Okay, so whenever you want to run a business, you have to do two things. As I said, you have to run the business, you have to make business go on. Okay, and second thing you have to do called business monitoring. Okay, now to run the business we require some data. Okay, like जैसे मैंने बोला कि रॉ मटेरियल आता है तो उसका इनवॉइस जनरेट होता है, बिल जनरेट होता है, अकाउंट सेटल्स होते हैं। ओके, जब भी कोई प्रोडक्ट सेल आउट होता है तो उसके डिटेल्स एंटर होते हैं। ओके, तो दिस डेटा इज कॉल्ड ऑपरेशनल डेटा। क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेशनल डेटा। ऑपरेशनल डेटा क्या होता है, operational data is the data which is used to run day-to-day business activity, बराबर। The systems which are used to perform these activities, okay, जैसे inventory control है, account packages है, okay, like invoice generation system है, okay, like all this type of system, salary calculation का जो system रहता है, ये सारी जो system है उसको बोलते हैं operational system। okay, that is called operational systems. Okay, I'm writing in plural form, systems, for purpose. Each organization will have large number of operational system. Okay, हर एक डिपार्टमेंट में उनका खुद का ऑपरेशनल सिस्टम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अकाउंट्स के पास उनका खुद का ऑपरेशनल सिस्टम होता है जहां पे अकाउंट सेटलिंग वगैरह होता है। ओके, मार्केटिंग वालों के पास उनका खुद का ऑपरेशनल सिस्टम होता है जिसमें मार्केटिंग रिलेटेड डेटा होता है। एचआर के पास उनका खुद का ऑपरेशनल सिस्टम होता है जिसमें एम्प्लॉयज के प्रोफाइल, ओके, किसने कब ज्वाइन किया, कब रिजाइन किया, कब इंक्रीमेंट मिला, कब उसका डेजिग्नेशन चेंज हुआ, वो सारा डेटा होता है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ईच डिपार्टमेंट हैज इट्स ओन ऑपरेशनल सिस्टम। So if you consider entire organization, there will be multiple operational systems. So I repeat, what is the purpose of operational systems? These operational systems will make use of this operational data so as to perform day-to-day business activities. Using this क्या होता है, day-to-day business activities. day-to-day business activities. Okay, but ये जो data है, it is not suitable for business monitoring. मॉनिटरिंग करना है मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर ऐसा कोई स्कीम निकालना है या हाउ वेल वी आर डूइंग इन अ पर्टिकुलर रीजन। ओके, अगर मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसको तो पूरे लाइक सपोज मैकडोनल्ड, उसको तो सोचना है कि इंडिया में क्या चल रहा है, बिकॉज इट इज मल्टीनेशनल कंपनी। अगर मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, इंडिया लेवल पे भी, कंट्री लेवल पे भी सोचते हैं, तो दे हैव टू फोकस ऑन वेरियस रीजन्स कि ये रीजन में क्या हो रहा है, वो रीजन में क्या हो रहा है। ओके, हाउ मच प्रॉफिट वी आर गेनिंग इन दिस पर्टिकुलर, लाइक मुंबई में से कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ओके, तो ये जो डेटा है बिजनेस रन करने के लिए जो डेटा यूज करते हैं, दिस डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर मॉनिटरिंग द बिजनेस। ओके, उसके लिए हमको लगता है समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। उसके लिए हमको लगता है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन आता कहां से है, किधर से भी नहीं आता है,
हमको खुद उसको जनरेट करना पड़ता है. ओके, this data may come from outside organization, may be generated within the organization. Okay, but strategic information is created by the organization itself. कैसे क्रिएट होगा? तो उसके लिए हमको एक सिस्टम चाहिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम. ओके, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम विल गैदर डेटा फ्रॉम ऑल दिस ऑपरेशनल सिस्टम्स. ये ऑपरेशनल सिस्टम के अंदर जो डेटा यूज हो रहा है, which is nothing but operational data, what information system will do? Information system will gather all the data being used in the operational system, and it will organize this data in a specific way such that it is converted into strategic information. Now, this strategic information is in such a form which can be used for monitoring the business. It is used for monitoring the business. Okay, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? What are the two types of system? Operational system क्या होता है, operational data क्या होता है, strategic information क्या होता है, and information system क्या होता है. ठीक है, all of you are clear? Information system का purpose क्या है? What information system will do? Information system will gather the data used in the operational systems. It will reorganize this data such a way that it is converted into strategic information. And this strategic information is designed in such a way that the monitoring of business becomes possible. ये टर्म समझे अभी तक सबको? All right, okay, fine. So will you be write down some points? Okay, can anyone let me know? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, great, great. Okay, so each organization has two types of systems. Each organization has two types of systems. First, operational systems. Operational systems. These systems are used to carry out day-to-day business activities. Repeat. I repeat, these systems are used to carry out day-to-day business activities. The data used by these systems is called operational data. The data used by these systems is called operational data. This data is not suitable for monitoring the business. This data is not suitable for monitoring the business. ओके, तो वो हो गया आपका ऑपरेशनल सिस्टम, उसका जो पर्पस है वो, और उसका जो डेटा है दैट इज ऑपरेशनल डेटा. ओके, सेकंड, इंफॉर्मेशन सिस्टम. It gathers data from operational systems. It gathers data from
operational systems and reorganizes it so as to provide strategic information. This information is suitable for monitoring the business. This information is suitable for monitoring the business and to make decisions. Okay, now this last term is very important. Decision making is actually very difficult job. Okay, for any organization. Okay, जो top management होता है, okay, like CEO, board of directors, MD, okay, वो जो लोग होते हैं, those who are making organization wise decisions, okay, the decision makers, उनके लिए decision making is actually extremely difficult job. तो उनको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए? उनको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो बोलते हैं स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन. ओके, ऑपरेशनल डेटा से उनको कुछ नहीं समझेगा. ओके, आज किसी एम्प्लॉय का सैलरी हुआ, ओके, या आज कोई रॉ मटेरियल आया, आज कोई बिल जनरेट हुआ, ओके, आज हमने 10 प्रोडक्ट्स सेल आउट किए, उतने इंफॉर्मेशन से, वो डेटा से दे विल नॉट बी एबल टू मेक एनी डिसीजंस. ओके, सो फॉर दैट पर्पस इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करेगा? इंफॉर्मेशन सिस्टम ये ऑपरेशनल डेटा कलेक्ट करेगा, उसको रीऑर्गेनाइज करेगा और कन्वर्ट करेगा स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन. नाउ दिस स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन इज सुटेबल फॉर monitoring the business and for making decisions. Okay, so it will help the decision makers in decision making process. Okay, तो कौन decision makers होते हैं? जो top management के लोग होते हैं, जैसे मैंने बताया. Okay, CEO, managing director, okay, board of directors, okay, जो ये सारे big decisions लेते हैं, उनको ये strategic information लगता है. बराबर? Okay, fine. Up to this, it is clear? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now another important point is, हमने ये खाली पहला difference देखा कि what is the difference between operational system and information system. Okay, again important from exam point of view, differences between operational system and information system. Okay, differences between operational system and information system. Okay, तो एक title डालो आप, differences between operational system and information system. Important from exam point of view, काफी बार पूछा गया है ये question. Okay, DWM is not a new subject, it is like from so many years. Okay, तो आप literally ऐसा part बनाओ, partition बनाओ in your copy, literally ऐसा partition बनाओ और title ऊपर लिखो operational system and information system. Okay, literally ऐसा title लिखो. Okay, now one by one we'll look at the differences, we'll try to understand. अगर ये differences समझ में आ गए आपको, okay, तो आपका आगे का समझना बहुत easy हो जाएगा. Okay, first difference. Okay, the first difference we have already seen. Okay, operational system का first point लिखोगे आप, used to perform day-to-day business activities. First difference, used to perform day-to-day business activities. Okay,
यहां पे यूज क्या आएगा, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग, यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, सेकेंड डिफरेंस भी हमको ऑलरेडी पता है, फिर भी लिखते हैं यहां पे, ऑपरेशनल सिस्टम यूजेस ऑपरेशनल डेटा, यहां पे होता है ऑपरेशनल डेटा। ओके, whereas यहां पे क्या होता है, it gives strategic information, it gives strategic information। ओके, ये दो तो हमको पता ही था, वी ऑलरेडी नो दिस टू। ओके, अभी थर्ड से शुरू करते हैं। सबने ये दो लिख लिए डिफरेंसेस? Yes, sir. Yeah. Okay, now because this operational system is used to perform day-to-day business activities, उसमें क्या होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रन होते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे थर्ड डिफरेंस क्या लिखोगे, इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमको ट्रांजैक्शंस रन नहीं करने हैं। रिमेंबर, वी डोंट वांट टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी। यहाँ पे कोई बिल जनरेट नहीं करना है, यहाँ पे किसी का सैलरी कैलकुलेट नहीं करना है। ओके, ना ही कोई डेटा एंट्री करनी है यहाँ पे हमको। ओके, यहाँ पे हमको ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। द पर्पस इज टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग यूजिंग स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। तो ये कैसे होता है, यू हैव टू परफॉर्म एनालिसिस ऑफ द डेटा। तो डेटा यहाँ पे जो भी स्टोर्ड है वो स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, इट हैज टू बी एफिशिएंट एनालिसिस प्रोसेसिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट डेटा एनालिसिस, एफिशिएंट डेटा एनालिसिस। ओके, तो दोनों का गोल अलग है, इसका गोल है एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, इसका गोल है एफिशिएंट डेटा एनालिसिस। ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑप्शन द डिफरेंस नंबर 4 आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं OLTP। OLTP का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एग्जैक्टली। ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये सिस्टम ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सारे ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली रन हो, इसका पर्पस ही वही है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। वेयरएज यहाँ पे हमको ट्रांजैक्शंस रन नहीं करने हैं, जैसे मैंने बोला हमको एफिशिएंट एनालिसिस करना है। दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग सिस्टम, OLAP सिस्टम। ओके, तो ये चौथा डिफरेंस लिख लो, operational system is also called OLTP system, okay, whereas information system is also called online analytical processing system। okay, काफी टाइम वाइवा में क्वेश्चन पूछते हैं, दो यू हैव प्रैक्टिकल एग्जाम, राइट, यू हैव प्रैक्टिकल एग्जाम फॉर DWM, बट प्रैक्टिकल के साथ वाइवा भी होता है। ओके, और वाइवा में काफी टाइम ये लोग पूछते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं पूछते हैं व्हाट इज OLTP एंड व्हाट इज OLAP। ओके, OLAP का फुल फॉर्म बताओ, तो OLAP का फुल फॉर्म क्या है, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, एंड OLTP का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, बराबर। ओके, नाउ हर एक जो डिफरेंस है ना वो पिछले वाले डिफरेंस से हम निकालेंगे। ओके, नाउ कैसे ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली प्रोसेस होंगे, ट्रांजैक्शन को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए क्या लगता है, उसके लिए आपका जो डिजाइन है डेटाबेस का वो ऐसा होना चाहिए ताकि ट्रांजैक्शंस एफिशिएंटली रन हो। वो कब पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है कि अगर आपने आपका डेटाबेस जो है वो ER मॉडलिंग से डिजाइन किया है। आप लोगों ने पढ़ा है ER मॉडलिंग, बराबर, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।
उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कौन सा एंटिटी है, कौन सा एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप 1 to many है, मैपिंग कंस्ट्रेंट्स क्या है, वो सब पता करते हैं, बराबर, और एक ईआर डायग्राम निकालते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा इज मॉडल्ड इन ऑपरेशनल सिस्टम, डेटा इज मॉडल्ड using ER modeling. Data is modeled using ER modeling. ओके, अभी यहाँ पे ER मॉडलिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे ER मॉडलिंग क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज ER मॉडलिंग क्यों यहाँ पे लगता है, ER मॉडलिंग इसलिए लगता है कि हमको ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करने हैं। ओके, यहाँ पे ER मॉडल नहीं चलेगा बिकॉज हमको करना है एनालिसिस, हमको ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट ही नहीं करने हैं यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे लगेगा या हेलो, एनी डाउट? ओके फाइन, तो हमको यहाँ पे ER मॉडल नहीं लगेगा, हमको लगेगा समथिंग कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटा इज मॉडल्ड यूजिंग मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग। ओके, तो ये टर्म आपके लिए नया है, व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग, तो वी विल सी दिस इन मोर डिटेल। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहाँ पे हमको ER डायग्राम से डिजाइन नहीं कर सकते हम, ये ER डायग्राम से हमने किया है ऑलरेडी, आप लोगों ने ऑलरेडी किया होगा। ओके फाइन, नाउ अगेन बेस्ड ऑन दिस वन मोर डिफरेंस, जैसे मैंने बोला हर एक डिफरेंस हम पिछले वाले डिफरेंस से निकालेंगे। आपने ER डायग्राम को सेट ऑफ टेबल्स में कन्वर्ट किया है, बराबर? कैन समवन टेल मी, ER डायग्राम टू रिलेशनल मैपिंग किया होगा आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. When you convert your ER diagram into a set of tables, can you tell me the tables are in which normal form? आपने normalization शायद skip किया होगा, बहुत difficult topic है। First normal form, second normal form, third normal form, BCNF. Can you tell me when you convert your ER diagram into set of tables, it is in which normal form? Sir, no one checks all those things like while we were doing Okay. ओके, आपके लेवल पे आपने चेक नहीं किया होगा, बट एक्चुअली जब ER डायग्राम डिजाइन करते हैं और उसको रिलेशनल मैप करते हैं, तो यू नीड टू चेक कि वो कौन से नॉर्मल फॉर्म में आ रहा है। ओके, एक्चुअली व्हेन यू डिजाइन, ओके, तो इट शुड बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। अगर आपका ER डायग्राम बराबर है, आपका ER डिजाइन बराबर है, तो व्हेन यू मैप इट टू द रिलेशनल टेबल्स, द रिलेशनल मैपिंग विल बी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ओके, अगर उसको ज्यादा ट्यून करना है तो फिर उसको वो लोग BCNF में कन्वर्ट करते हैं, वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म, बराबर? ओके, इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, द डेटा इज नॉर्मलाइज्ड, तो यहां पे लिखो नेक्स्ट डिफरेंस, डेटा इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, अभी आपने पढ़ा होगा कि लाइक नॉर्मलाइजेशन क्यों करना होता है, व्हाई यू रिक्वायर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। अगर डेटा नॉर्मलाइज नहीं होगा तो क्या हो सकता है? कैन समवन टेल मी, इफ योर डेटा इज नॉट नॉर्मलाइज, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? Redundancy. Exactly, very first problem is redundancy, और redundancy leads to so many problems। जैसे ही रिडंडेंसी आ गया, इनकंसिस्टेंसी आ सकता है, अपडेट करने में प्रॉब्लम होता है, डिलीट करने में प्रॉब्लम होता है। ओके, इवन देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंसर्टिंग न्यू डेटा इफ डेटा इज नॉट प्रॉपर्ली नॉर्मलाइज्ड। ओके, तो रूट क्या है इसका? रूट यहाँ पे है, हमको ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना है एंड वो भी एफिशिएंटली करना है। तो ये एफिशिएंट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग तभी होगा इफ एंड ओनली इफ योर डेटा इज नॉर्मलाइज्ड। ओके, यहाँ पे डेटा नॉर्मलाइज्ड है। यहां पे अभी आके देखोगे तो हमको ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना ही नहीं है, ओके, तो यहाँ पे जो रिडंडेंसी है वो कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे अगर डेटा रिडंडेंट भी हुआ तो प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ओके, इनफैक्ट समटाइम्स इट विल बी हेल्पफुल, रिडंडेंसी विल हेल्प यू हियर,
बिकॉज आपको क्या करना है, डेटा एनालाइज करना है। डेटा एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेटा को बार बार रीड करना पड़ेगा, बार बार रीड करना पड़ेगा। अभी तुम यहां से रीड करो या वहां से रीड करो, जब ट्रांजैक्शन प्रोसेस ही नहीं करना है, तुम किधर से भी रीड करो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, तो यहां पे डेटा इज डीनॉर्मलाइज। ये डीनॉर्मलाइज आपके लिए नया टर्म होगा। ओके, तो यहां पे लिखो आप डेटा इज डीनॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज, डेटा इज डीनॉर्मलाइज्ड। ओके, तो यहां पे जो हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ओके, यहां पे हमको अप्लाई करना पड़ेगा डीनॉर्मलाइजेशन। ओके, एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस। कोई मुझे बताएगा जब नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या होता है टेबल के साथ? गिवन अ टेबल, कन्वर्ट इट इनटू थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्या होता है बेसिकली when you try to convert a relation into third normal form or BCNF? किया है आप लोगों ने? Can anyone tell me? Functional dependency. Okay, We functional dependency होता है, but मेरा क्वेश्चन क्या है? Okay, I'm giving you one relation. Okay, I'm giving you some relation. R is equal to, there are some attribute, and I will give you set of FD. Functional dependency is equal to some FDs में दूंगा. Okay, now I'll tell you convert this relation R into third normal form. Okay, जब भी ऐसा करोगे तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? मल्टीपल टेबल्स विद वेरी गुड। जब भी हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं, रिलेशन विल स्प्लिट, रिलेशन विल बी डिवाइडेड इनटू सब रिलेशंस। प्रोजेक्शंस में डिवाइड होता है, R1, R2, मे बी मोर देन 2 डिपेंडिंग अपॉन द सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन शॉर्ट, whenever you try to normalize a relation, a table, it is split into further tables. Denormalization में exactly उल्टा होगा। Given 2-3 tables, when you denormalize, the tables will be merged into single table. इससे उल्टा प्रोसेस होगा, और ये उल्टा प्रोसेस करने से यहाँ पे redundancy जनरेट होगा, but redundancy is not an issue here. In fact, जैसे मैंने बोला, वो हेल्प करेगा आपको डेटा रीड करने में। तो डेटा हियर इज डीनॉर्मलाइज्ड। ओके, समझ में आ रहा है आपको? फाइन। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस। ओके, डिफरेंस नंबर 7। ओके, यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, हर एक ट्रांजैक्शन कोई ना कोई ऑपरेशन करेगा। whenever you carry out any transaction, it will perform operation. ओके, आपने डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस पढ़े होंगे। कौन से ऑपरेशंस आते हैं डेटा मैनिपुलेशन में? डेटा मैनिपुलेशन में कौन से ऑपरेशंस आते हैं? insert, insert, delete, update. वेरी गुड। यहाँ पे सारे के सारे ऑपरेशंस लगेंगे। डेटा रीड भी होता है, अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है, इंसर्ट भी होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखो डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस लिखो। ऑपरेशंस इंक्लूड रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट। रीड, राइट, अपडेट एंड डिलीट। अभी यहां पे लिखो। ओके, नाउ ये चारों के चारों ऑपरेशंस क्यों लगते हैं? कोई ट्रांजैक्शन राइट करेगा, कोई ट्रांजैक्शन अपडेट करेगा, कोई ट्रांजैक्शन डिलीट भी करेगा, कोई ट्रांजैक्शन रीड भी करेगा। ओके, यहां पे हमको एनालिसिस ही करना है। ओके, हमको यहाँ पे सिंपल एनालिसिस ही करना है। तो एनालिसिस करने के लिए ना तो आपको कुछ डिलीट करना है, ना तो आपको कुछ अपडेट करना है, ना तो आपको कुछ राइट करना है। क्या करना है? रीड ही करना है। रीड करो, एनालाइज करो, रीड करो, एनालाइज करो, रीड करो, एनालाइज करो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? मोस्ट ऑफ द टाइम्स रीड ऑपरेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम रीड ऑपरेशन। ओके, तो यहां पे जो क्वेरीज होती है, दे आर कॉल्ड रीड इंटेंसिव क्वेरी। क्या बोलते हैं उसको? रीड इंटेंसिव क्वेरी। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेरी विल रीड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एनालाइज करने के लिए। ओके, डिलीट, अपडेट हार्डली कभी हुआ तो हुआ, नॉर्मली नहीं होता है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम रीड ऑपरेशन ही होता है। बराबर? ओके, नाउ
बिकॉज ऑफ दैट नेक्स्ट डिफरेंस नंबर 8. बहुत सारे डिफरेंसेस हैं यहाँ, बट जैसे मैंने बोला हर एक डिफरेंस प्रीवियस डिफरेंस से जनरेट होता है, तो याद रखने में आसानी होगी आपको. ओके, नाउ यहाँ पे रीड राइट अपडेट डिलीट सब होता है. डिलीट क्या करता है? डेटा को परमानेंटली डिलीट कर देता है. अपडेट को क्या करता है? अपडेट क्या करता है? एग्जिस्टिंग डेटा को रिप्लेस करता है न्यू डेटा से. ओके, कंसिडर किसी ने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया. जैसे ही पैसा डिपॉजिट किया, प्रीवियस बैलेंस इज ओवर रिटर्न विद अ न्यू बैलेंस. प्रीवियस बैलेंस इज लॉस, बराबर, नया बैलेंस आ गया. इससे क्या होता है? जो डेटा का साइज है, द साइज ऑफ डेटा विल नॉट ग्रो बियॉन्ड फ्यू MB. ऐसा नहीं होगा कि पैराबाइट्स में डेटा है आपके पास डेटाबेस सिस्टम में, बिकॉज काफी टाइम डेटा अपडेट होता है, काफी टाइम डेटा डिलीट भी होता है. ओके, इंसर्ट होता है बट नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली. ओके, सो साइज ऑफ द डेटा इज रिलेटिवली स्मॉल. ओके, क्या लिखोगे नेक्स्ट डिफरेंस? साइज ऑफ डेटा is relatively small. ओके, यहां पे क्या आएगा डिफरेंस? यहां पे तो रीड ऑपरेशन ही कर रहे हो, ओके, बट देयर इज वन प्रोसेस कॉल्ड ETL प्रोसेस. हम पढ़ेंगे ETL इन डिटेल. ETL प्रोसेस से क्या होता है? डेटा लोड होता है डेटा वेयरहाउस में. उसको हम इंसर्ट ऑपरेशन नहीं बोलेंगे. इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंसर्ट ऑपरेशन. ओके, हमने बताया ना इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करता है? इट विल गैदर इंफॉर्मेशन, इट विल गैदर डेटा फ्रॉम ऑपरेशनल सिस्टम. तो वो लोड करता है डेटा, लोड करता जाता है. इट विल गो ऑन लोडिंग डेटा. ओके, बट इट विल नेवर अपडेट डेटा, it will never delete any data. Means over a period of time, size of the data in information system grows like exponentially. Terabytes, tetrabytes में डेटा रहेगा, बहुत बड़ा डेटा साइज हो जाएगा. That's why I said अगर आपको बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़ना है तो आपको नॉलेज होना चाहिए इंफॉर्मेशन सिस्टम का, डेटा वेयरहाउस का, बिकॉज बिग डेटा एनालिटिक्स में भी बहुत बड़ा डेटा होता है. ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे डिफरेंस में? size of data is very large in terms of terabytes to petabytes. Size of data is very large in terms of terabytes to petabytes. Okay, now because of that क्या होगा? यहाँ पे size of the data small है and transaction processing efficiently run हो रहा है. Okay, you submit a transaction. कितना टाइम लगता है ट्रांजेक्शन रन होने में? हार्डली अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. जैसे हम बैंक में भी जाते हैं, ओके, ATM से पैसा विड्रॉ किया, इमीडिएटली यू गेट SMS. ओके, ट्रांजेक्शन रन हो गया, विद इन फ्यू सेकंड्स यू गेट SMS. वो तो सब नेटवर्क डिले पकड़ के. ओके, it means that response time of the system is very good. Response time of the system is very good. बराबर. यहां पे क्या है? Size of the data is very big. Okay, और analysis is not like transaction processing कि क्वेरी डाला हो गया, ऐसा नहीं है. यहाँ पे एनालिसिस करने में बहुत सारा डेटा रीड करना पड़ता है, उसको लाइक ड्रिल डाउन ये वो सब करना पड़ता है. Then you perform analysis, then you get output of the analysis. It means that once you submit an operation here, it will take lot of time to get the result. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Response time is poor. Response time is poor in terms of seconds to minutes. Response time is poor in terms of seconds to minutes. Okay, आई होप आपको समझ में आ रहा है एक के बाद एक जो डिफरेंस हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे?
Hello. Sir, in the 9th point, response time is very good, and in terms of what? This is in terms of like fraction of second. Na? You can write in terms of sub-second. Sub-second, matlab, it will take hardly fraction of second to complete the transaction. I'm talking about real transaction. बराबर, मैंने एटीएम से पैसा निकालने की बात की, उसमें तो बाकी का भी बहुत सारा डिले होता है, पिन डालो, ये करो, बट एग्जैक्टली जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग का टाइम है, आपका बैलेंस अपडेट हुआ, वो जो टाइम है, दैट इज लाइक हार्डली माइक्रो सेकेंड्स. बराबर. Yes. So, that is why it is called response time of the system is very good. It is in terms of sub-second. बट यहाँ पे तो बहुत बड़ा डेटा है. पहली बात तो ये, और एनालिसिस करना इज लाइक यू हैव टू सबमिट अ वेरी बिग ऑपरेशन. ओके, तो उसको टाइम लगेगा. इट विल नॉट हैपन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स टाइम इज पुअर इन टर्म्स ऑफ, इट इज इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स टू मिनट्स. कभी कभी मिनट्स लग जाते हैं वो खत्म होने में. ओके, clear all of you? Yes. Yes. Okay, yeah. Okay, now difference number next, difference number 10. Difference number 10. यहां तक सबका हो गया ना लिख के? Yes, sir. Yeah. Now, what is the, like, who are the users? Who are the users of operational system? Consider any organization. And who are the users of information system? इसको कौन यूज करेगा और इसको कौन यूज करेगा? Sir, the people who are related to the organization but are not the employee of the organization may use operational system, but information system is specifically used by the members of the organization and employees. Okay, more precisely, because you are telling me this difference, because मैंने example दिया ATM से amount निकालने का. You are not employee of the bank, but still you are using that system. Okay, we are talking right now about the organization, within the organization. Okay, तो अगर कोई बिल जनरेट करना है या किसी का सैलरी कैलकुलेट करना है या कोई डेटा एंट्री करना है, ओके, तो जो एम्प्लॉइज है बट हु आर नॉट डिसीजन मेकर्स, ओके, पकड़ लो अकाउंटेंट पकड़ लो, या लाइक कोई जो एम्प्लॉय है वो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है उसको पकड़ लो. ओके, फाइन. तो दे आर एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बट दे आर नॉट डिसीजन मेकर्स. दे आर द यूजर्स ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम. और जैसे अभी आपने बताया कि लाइक समवन हु इज नॉट एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मे यूज द सिस्टम. करेक्ट. ओके, बट द नंबर ऑफ यूजर्स आर लिमिटेड. यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स आर लिमिटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम. यहाँ पे बहुत सारे लोग यूज करेंगे उसको, बिकॉज जैसे आपने बताया कि जो एम्प्लॉय नहीं है वो भी यूज करेगा. ओके, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द नंबर ऑफ यूजर्स फॉर ऑपरेशनल सिस्टम इज वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज. whereas इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करने वाले कितने लोग हैं? दोज हु आर ओनली द डिसीजन मेकर्स. जिनको डिसीजन करना है वही यूज करेंगे. ओके, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ गया? नंबर ऑफ, यहां पे लिखेंगे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स. लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स. और यहां पे क्या डिफरेंस आएगा? यहां पे क्या डिफरेंस आएगा? इट इज इंटेंडेड फॉर only top management. It is intended for only top management, that is limited number of users. That is limited number of users. ओके, ये डिफरेंस तो अभी समझा होगा आपको, बराबर? Yes, sir. या तो यहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स है. ओके, नाउ बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? डिफरेंस नंबर 11. बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है? जो डेटा का एक्सेस फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज यहां पे लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स है, एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस भी रन होंगे.
ओके, तो डेटा का जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे बहुत हाई है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सेस फ्रीक्वेंसी इज नॉट वेरी हाई. ओके, लाइक डेली thousands ऑपरेशंस यहाँ पे नहीं होंगे. ओके, बिकॉज इट इज यूज्ड बाय ओनली वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. बराबर. तो द नेक्स्ट डिफरेंस इज एक्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा in operational system. In operational system, access frequency of data is very high. Access frequency of data is very high. Whereas यहां पे क्या लिखोगे इंफॉर्मेशन सिस्टम में, access frequency of data is low to moderate. Low to moderate. ओके, तो नॉर्मली डेटा इतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होगा. जितना फ्रीक्वेंटली यहां पे एक्सेस होता है उतना फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं होगा. ओके, इट इज रिलेटिवली लो. और कभी कभी ज्यादा यूज हुआ तो भी रिलेटिवली वो मॉडरेट लेवल पे जाता है. ओके, बिकॉज कभी कभी एनालिसिस होता है, डेली एनालिसिस नहीं होता है. बराबर. ओके, यहां तक सबको क्लियर है. लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ओके, लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस. लास्ट नहीं बोलूंगा, और एक है. ओके, ये जो लास्ट के दो डिफरेंसेस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है जरा देखो ध्यान से. हाँ, यहां पे हमने डिस्कस किया कि अपडेट भी होता है, डिलीट भी होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ द डेटा इज स्मॉल. ओके, एंड रिस्पॉन्स टाइम इज गुड. बराबर. अपडेट और डिलीट होने से क्या होता है, हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा आपको. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी ने अमाउंट डिपॉजिट किया, तो करंट बैलेंस इज रिप्लेस्ड बाय द न्यू बैलेंस. पिछले वाला बैलेंस गया, इट इज ओवर रिटन, इट इज रिप्लेस्ड. ओके, इट मींस दैट यहां पे आपको हिस्टोरिकल डेटा नहीं मिलेगा. यू विल ऑलवेज गेट अप टू डेट डेटा, लेटेस्ट डेटा. तो यहां पे क्या लिखोगे, contains only latest data. Contains only latest data. This is very important. हाँ, अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो रीड ऑपरेशन ही होता है, और यूजिंग दैट ETL प्रोसेस डेटा लोड होता जाता है. ओके, इट विल कीप ऑन लोडिंग, but it will never delete any data, it will never update any data. Okay, तो अगर यहाँ पे जब डेटा लोड होता जाता है, it means that over a period of time डेटा हिस्टोरिकल हो जाएगा. 5 साल पुराना डेटा, 2 साल पुराना डेटा, 3 साल पुराना डेटा, वो सारा डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा. बिकॉज एनालिसिस करना है आपको, तो करंट डेटा पे नहीं होगा एनालिसिस. ओके, एनालिसिस करना है तो आपको करंट डेटा भी लगेगा और पिछला डेटा भी लगेगा. लास्ट ईयर ये रीजन में क्या हुआ था, उसके ऊपर से यू कैन परफॉर्म डिसीजन आज का. लास्ट मॉनसून सीजन में कैसा हुआ था, ये 50% सेल रखा था तो प्रॉफिट बढ़ा था कि नहीं बढ़ा था, कम हुआ था, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ था लास्ट मॉनसून सीजन में, या लास्ट क्रिसमस पे क्या हुआ था, वो एनालाइज करना पड़ेगा. अगर दिवाली पे सेल रखना है तो पिछली 3 दिवाली का डेटा निकालो, उसको एनालाइज करो, एंड देन यू कंक्लूड कि ओके ये दिवाली में हम ये प्रोडक्ट पे सेल रखेंगे. समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझा आपको, राइट? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा? इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए. Yes, sir, could you repeat? या ओके, जैसे हमने बात की यहाँ पे डे टू डे ट्रांजैक्शन होता है, एंड मैंने बताया कि डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी, व्हाई दिस डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग. व्हाई दिस डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर डिसीजन मेकिंग? क्योंकि वो आज का ऑपरेशन है, डेली ये ऑपरेशन होते रहते हैं, उससे आप बिजनेस रन कर सकते हो.
बट डेटा एनालाइज नहीं कर पाओगे यहाँ पे आप, क्योंकि पिछला जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है या तो वो अपडेट हो चुका है। आपके पास क्या है अवेलेबल? ओनली द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, अप टू डेट आज का डेटा अवेलेबल है। आज के डेटा के ऊपर आप एनालिसिस नहीं कर सकते, बराबर। आज आपने कितने प्रोडक्ट सेल किए, आज का दिन का प्रॉफिट कितना है, उसके ऊपर से आप कल का डिसीजन नहीं ले सकते। वो डिसीजन लेने के लिए आपको चाहिए हिस्टोरिकल डेटा। जैसे मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, अभी आपको ये दिवाली पे नए नए ऑफर्स देने हैं कस्टमर्स को। ओके, दिवाली बम्पर सेल ये सब आता है ना, ऐड आप देखते रहेंगे। ओके, कस्टमर्स को आपको ऑफरिंग्स देने हैं दिवाली पे, तो आपको कैसे देना पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट पे आप ऑफरिंग्स दोगे? ओके, वो डिसाइड करने के लिए पिछली 3 दिवाली का डेटा निकालो। कस्टमर्स कौन से प्रोडक्ट के लिए जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, कौन सा सेल ज्यादा हो रहा है, कौन से प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं। ओके, कौन से प्रोडक्ट पे सेल्स देने मतलब ऑफर्स देने के बाद सेल बढ़ा है, मतलब पिछली 3-4 दिवाली का आपको डेटा निकालना पड़ेगा। वो कहां से आएगा? यहाँ पे तो सब डेटा डिलीट हो चुका है या तो अपडेट हो चुका है। वो डेटा आएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम से। वो कब पॉसिबल है? यू कीप ऑन लोडिंग डेटा। जैसे मैंने बताया ETL प्रोसेस में डेटा लोड होता जाता है, बट डेटा कभी भी अपडेट नहीं होगा, कभी भी डिलीट नहीं होगा। ओके, इट मींस दैट यहाँ पे आपके पास करंट डेटा है, ऑब्वियसली करंट डेटा है, प्लस हिस्टोरिक डेटा भी है। हिस्टोरिक डेटा भी है, समझा अभी सबको? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपको करंट डेटा, लेटेस्ट डेटा प्लस हिस्टोरिकल डेटा भी मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes. राइट। तो अभी आप डिफरेंस लिखो। ऑपरेशनल सिस्टम कंटेन्स ओनली लेटेस्ट एंड करंट डेटा। ऑपरेशनल सिस्टम कंटेन्स ओनली लेटेस्ट एंड करंट डेटा। information system contains current as well as historic data, current as well as historic data to support data analysis, to support data analysis. Okay, I will give you another example. ये मैंने जो दिवाली सेल का example दिया, I can give you another example. Say for example, your organization, your company is receiving raw material. तो raw material के लिए suppliers होते हैं. Okay, they provide raw material. Say for example, कोई भी car manufacturing company ले लो, उनको steel लगता है, metal लगता है. Okay, तो raw material लगता है, and raw material supply करने के लिए suppliers होते हैं, बराबर? Now company wants to decide whether to continue with the same supplier or we need to change the supplier. कैसे डिसाइड करेंगे वो लोग? आज ये सप्लायर ने कोई सप्लाई किया है रॉ मटेरियल, आज जो सप्लाई हुआ उसके ऊपर से दे कैन नॉट डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू द नेक्स्ट सप्लाई। नेक्स्ट जो सप्लाई है वो इधर से ही लेंगे या कोई और सप्लायर को ढूंढना है हमको, कैसे डिसाइड करेंगे? दे विल लुक एट द हिस्ट्री। ये सप्लायर जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो कौन सी कॉस्ट पे कर रहा है, ओके, उसका क्वालिटी कैसा है, ओके, वो टाइम पे सप्लाई दे रहे हैं कि वो डिले कर रहे हैं बार बार, वो सब एनालाइज करने के बाद दे विल डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू विद दिस सप्लायर और हमको कोई और सप्लायर ढूंढना पड़ेगा, बराबर। मगर उसके लिए उनको करंट डेटा नहीं, उनको पिछला वाला डेटा भी चाहिए। दे विल एनालाइज 2 साल से ये सप्लायर सप्लाई कर रहा है मटेरियल, ओके, कौन से कॉस्ट पे कर रहा है, हमको और कोई सप्लायर मिल रहा है जो लो कॉस्ट पे कर रहा है बट क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, टाइम पे सप्लाई कर रहा है, ओके, तो समझ में आया? आपको हिस्टोरिकल डेटा लगेगा। करंट डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल डेटा। विदाउट हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस पॉसिबल ही नहीं है, एंड विदाउट एनालिसिस डिसीजन नहीं हो पाएगा आपसे। समझ में आया ये पॉइंट अच्छे से? दिस एग्जांपल इज लाइक इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the importance of historic data. और अभी लास्ट वाला डिफरेंस, ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th वाला, और अभी 13th वाला डिफरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने डिस्कस किया कि हु आर द यूजर्स
large number of users. Who are the users? The employees of the organization, but they are not decision maker. Okay, accountant है, okay, like sales person है, okay, जो marketing campaign करते हैं वो लोग हैं, okay, जो production में काम करते हैं वो लोग हैं, but they are not decision maker. Okay, what kind of operations they perform? They perform these transactions: read, write, update, delete. Kind of operation that they perform is well defined. पकड़ लो एक अकाउंटेंट डेली क्या करेगा? अकाउंट में क्रेडिट करेगा, डेबिट करेगा, बिल जनरेट करेगा, इनवॉइस जनरेट करेगा, नथिंग बट उसका जो रोल है वो प्री डिफाइन है. ओके, उसका जो रोल है वो प्री डिफाइन है, उसको वही काम करना है, रोज का रोज उसको वही काम करना है. इट मीन्स दैट अगर हर एक यूजर जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, उसका रोल प्री डिफाइन है, वेल डिफाइन है, और उसको वही का वही काम रोज करना है, इट मीन्स दैट द ओवरऑल यूजेज ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम is well defined. It is well defined. Okay, and it is repetitive. Well defined and repetitive होता है, वही का वही ऑपरेशन रोज होता है, and it is well defined. It is not like out of the box अकाउंटेंट कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका वो जॉब ही नहीं है, उसका जॉब वेल डिफाइंड है. उसको अकाउंट क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, बिल जनरेट करना है, ये करना है, मतलब बेसिकली उसका वेल डिफाइंड जो जॉब है वही करना है, एंड डेली वही करना है उसको. समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? यहाँ पे क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम इज यूज्ड बाय whom? It is used by decision makers. They will perform decision. तो उनका रोल वेल डिफाइंड नहीं है. As and when required, they perform that type of analysis. Okay, तो अगर जो कोई सेल्स मैनेजर है, मैनेजर लेवल पे है, उसको समझ में आता है कि यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल डिक्लाइन हो रहा है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो उसको एनालाइज करना है. बराबर, उसका वेल डिफाइंड नहीं है कुछ कि आज ये एनालाइज करो, कल वो एनालाइज करो, परसों वो एनालाइज करो, ऐसा नहीं है. उसका जो रोल है वेल डिफाइंड नहीं है. As and when required, they perform that type of analysis, and moreover it is not repetitive in nature. रोज का रोज वही एनालिसिस नहीं करना है. एक बार एक एनालिसिस हो गया, डिसीजन इज मेड, नेक्स्ट टाइम आप और कुछ डिफरेंट एनालिसिस करोगे, उसके ऊपर से और कुछ डिफरेंट डिसीजन लोगे. इट इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर. ये लास्ट वाला डिफरेंस समझ में आया सबको? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लास्ट वाला डिफरेंस. Yes, sir. Understood. Sir, Yeah. can you repeat the last point for information system, please? Yeah, I will repeat because this is very important. I will repeat this point. Let me repeat slightly in a different way. जब भी आपको एक सिस्टम डिजाइन करने का शुरू करते हो, what is the first step? सिस्टम डिजाइन शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या होता है? यूजर्स रिक्वायरमेंट. यूजर को क्या चाहिए सिस्टम से वो पहले पता होना चाहिए. देन ओनली यू कैन डिजाइन अ सिस्टम विद सर्टेन गोल्स इन योर माइंड कि ये सिस्टम से ये तरीका का एक्सपेक्टेशन है, ये रिपोर्ट जनरेट होना चाहिए, ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. बट वो सब कब पॉसिबल है? अगर सिस्टम का यूजेज वेल डिफाइन है, सिस्टम का यूजेज रिपीटेटिव है इन नेचर, देन इट इज पॉसिबल. सो ऑपरेशनल सिस्टम का जो यूजेज है, इट इज वेल डिफाइंड एंड इट इज रिपीटेटिव इन नेचर बिकॉज सारे के सारे जो यूजर्स है ऑपरेशनल सिस्टम के, दे हैव वेल डिफाइंड जॉब. ओके, उनको वही का वही काम करना है डेली. तो ओवरऑल यूजेज ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम इज वेल डिफाइंड एंड रिपीटेटिव इन नेचर. इंफॉर्मेशन सिस्टम किसके लिए है? इंफॉर्मेशन सिस्टम टॉप मैनेजमेंट के लिए है, डिसीजन मेकर्स के लिए है. उनका जॉब वेल डिफाइंड नहीं होता है. ओके, कोई सीईओ पकड़ लो, वो डेली ऑफिस जाके वही का वही जॉब नहीं करता है. उसका जॉब वेल डिफाइंड नहीं है. उसको ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, उसको बिल जनरेट नहीं करना है, उसको एनालिसिस करना है. तो क्या वो रोज वही एनालिसिस करते बैठेगा? नहीं.
एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड उसको सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ता है, तो इट इज सिचुएशनल. इट इज कॉल्ड एडहॉक. एडहॉक का मतलब पता है सबको, एडहॉक क्या होता है? एडहॉक मतलब नीड बेस्ड. एडहॉक मतलब नीड बेस्ड. तो जैसा सिचुएशन है, जैसी नीड है, उस तरीका का एनालिसिस उनको करना पड़ता है. सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट रिपीटेटिव इन नेचर. As and when required, as and when needed, that type of analysis they have to perform. So overall usage of information system is ad hoc, need based, not repetitive. It is unpredictable. It is unpredictable. Okay. आज सीईओ जाके क्या एनालाइज करेगा सिस्टम में, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते. इट इज अनप्रिडिक्टेबल. समझ में आया सबको ये लास्ट वाला डिफरेंस? किसी को डाउट है लास्ट पॉइंट में? ओके. सो अभी आप डिफरेंस लिखो, लास्ट वाला डिफरेंस उसको हाईलाइट करके रखो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ओके. द ओवरऑल यूजेज ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम, the overall usage of operational system is well defined and repetitive whereas in information system, overall usage of the system is ad hoc, need based, and unpredictable. ओके. जैसे मैंने बोला, ये लास्ट के जो दो डिफरेंसेस है, डिफरेंस नंबर 12 एंड डिफरेंस नंबर 13, इसको आप हाईलाइट करके रखो. ये वाला पार्ट हाईलाइट करके रखो. ओके. अगर डायमेंशनल एनालिसिस समझना है, मल्टी डायमेंशनल मॉडलिंग क्या होता है, ओके, वो समझना है, तो ये दो डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है. ओके, फाइन. So these are the differences between operational system and information system. Important from exam point of view. काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है. Differentiate between operational system and information system. Differentiate between OLTP and OLAP. ऐसा भी पूछते हैं. हाँ, Differentiate between OLTP and OLAP. तो भी यही आएगा. बराबर. सबको ये डिफरेंसेस अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड. अभी मैं क्या बोलूंगा आपको, ये कॉलम जो आपने लिखा है ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कॉलम, ये कॉलम पे फोकस करो. ये कॉलम पे, आपका जो पूरा कॉलम है उसके ऊपर फोकस करो आप. अगर ये कॉलम के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसके कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, वो यहां से पता चलेगा. ओके. इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन. अभी डिफरेंसेस भूल जाओ मतलब फोकस करो ये कॉलम के ऊपर. ये याद रखना है आपको डिफरेंसेस, बट अभी फोकस करो ये कॉलम के ऊपर. क्या समझने के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है. इट इज यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग, इट प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, इट इज यूज्ड फॉर एफिशिएंट डेटा एनालिसिस. उसमें मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल यूज होता है, उसमें डीनॉर्मलाइज्ड डेटा होता है, उसमें रीड इंटेंसिव क्वेरीज होती है, साइज ऑफ द डेटा इज वेरी लार्ज. ओके. उसमें हिस्टोरिक डेटा भी होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका जो यूजेज है वो नीड बेस्ड होता है. एडो. समझ में आया? ये कॉलम के ऊपर आप फोकस करोगे तो आपको समझ में आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. राइट.
तो अगर आपको कोई पूछता है क्वेश्चन, अगर मैंने ट्विस्ट किया, ओके मैं पेपर सेटर हूं तो मैं नॉर्मली ऐसे रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं अलग से पूछूंगा, ओके व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो उसमें हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आपने ये डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, and if you only focus on the column of information system, you will get all the characteristics of the information system. बराबर समझ में आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? ओके, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके गुड, राइट, फाइन। सो अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, कैन यू इंप्लीमेंट दिस विथ नॉर्मल डेटाबेस? कैन यू इंप्लीमेंट दिस विथ नॉर्मल डेटाबेस? सबसे पहले No, तो नॉर्मल, sir. सबसे पहले तो नॉर्मल डेटाबेस में मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल ही नहीं होगा, उसका डेटा पूरा नॉर्मलाइज किया हुआ है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। साइज ऑफ द डेटा इज नॉट वेरी बिग, ओके, उसके पास हिस्टोरिक डेटा नहीं है, बराबर। तो अभी अभी ये जो हमने शुरू किया था ना, वहां पे वापस जाते हैं। Why do you need data warehouse system? अभी हमको जवाब मिलेगा, look at the characteristics of information system. To implement information system, normal database system is not sufficient. You cannot implement these characteristics of information system using normal database. And that's why we require data warehouse. Okay, so write down the next point. Differences खत्म हो गए, differences are over. Write down the next point. To implement unique characteristics of information system, to implement unique characteristics of the information system, traditional database is not suitable. Traditional database is not suitable. Therefore, we need data warehouse. Therefore, we need data warehouse. So can you just repeat the whole point again? Okay, to implement unique characteristics of information system, to implement unique characteristics of this information system, traditional database is not suitable. Traditional database is not suitable. And therefore, we need data warehouse. And therefore, we need data warehouse. Okay. किसी को डाउट है यहाँ पे? नीड फॉर डेटा वेयरहाउस सबको समझा, क्यों चाहिए डेटा वेयरहाउस? Can anyone let me know? किसी को डाउट है? No, sir. Okay, so now we can proceed. Okay,
Now let us formally define data warehouse. Okay, ये भी बहुत important है. From exam point of view, वाइवा में भी पूछते हैं, और even in future you will require. Okay, define data warehouse. Okay, define data warehouse. Okay, so now we formally define the data warehouse. Okay, write down. A data warehouse can be defined as subject oriented, integrated, non-volatile, integrated, non-volatile, time variant collection of data, non-volatile, time variant collection of data in support of management decision making, in support of management decision making. Okay, all of you have written this definition, or you want me to repeat definition? Sir, repeat. Okay, I repeat. How do you define data warehouse? Okay, so data warehouse can be defined as subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data, subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data in support of decision making, Sir, Yes. what do you mean by subject oriented in this particular context? बताता हूं ना, अभी तो डेफिनेशन लिखा. सबने डेफिनेशन लिख लिया? Yes, sir. Okay, Yes, sir. now let us divide this definition into two parts. पहले पार्ट में हमने डिफाइन किया डेटा वेयरहाउस को यूजिंग फोर टर्म्स: सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, नॉन वॉलेटाइल, टाइम वेरिएंट कलेक्शन ऑफ डेटा. एंड सेकंड पार्ट में हमने बोला इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग. So second part is very easy to understand, that the purpose of data warehouse is not to run the transactions, it is used for decision making. That is very clear, right? Now let us consider these four terms. What do you mean by subject oriented? Okay, तो अभी हमने जब डिफरेंसेस डिस्कस किया उसमें एक डिफरेंस था, द डेटा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डीनॉर्मलाइज्ड. मैंने बोला डीनॉर्मलाइज क्या होता है, ओके, और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है. तो व्हेन यू परफॉर्म नॉर्मलाइजेशन इन ऑपरेशनल सिस्टम, जैसे हमने डिस्कस किया, एक रिलेशन जो होता है, दैट रिलेशन विल बी स्प्लिट इनटू सब रिलेशंस. बराबर, राइट? दैट इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. डीनॉर्मलाइजेशन में इससे उल्टा होता है, मल्टीपल टेबल्स आर कंबाइंड इनटू सिंगल टेबल. नाउ कंसिडर ये जो रिलेशन था, वो रिलेशन था कस्टमर रिलेशन था. ओके, इसमें कस्टमर रिलेशन का जो पूरा डेटा है, ड्यू टू सर्टेन फंक्शनल डिपेंडेंसी,
I need to divide this customer data into 2 tables. Okay, I need to divide this data into 2 tables. Okay, for efficient transaction processing. दोनों में कस्टमर का ही डेटा है, बट मेरे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऐसे थे कि मुझे डिवाइड करना पड़ा कस्टमर का डेटा इनटू 2 टेबल्स. बराबर? Why? Because we want to run transaction efficiently in operational system. Okay, so as to remove redundancy in the customer data. But अभी हम क्या करेंगे in information system in data warehouse हम क्या करेंगे? Denormalize करेंगे. It means that यहाँ का डेटा कंबाइन करके एक ही टेबल में डालेंगे. ओके, एक ही टेबल में डालेंगे. तो ये टेबल के अंदर सारा का सारा कस्टमर का डेटा मिलेगा. कोई भी कस्टमर का कुछ भी डेटा रहेगा ये टेबल में से मिलेगा. ठीक है. Similarly, consider any other table. In data warehouse, you consider any other table. Let's say this table is about product. This table is about product. तो प्रोडक्ट का सारा डेटा इधर से ही मिलेगा. आपको और कोई टेबल में जाने की जरूरत नहीं है. ओके, ये प्रोडक्ट कौन से सप्लायर ने सप्लाई किया, वो सप्लायर का एड्रेस क्या है, वो सब कुछ इधर से ही मिलेगा आपको. ओके, दिस विल नॉट हैपन इन ऑपरेशनल सिस्टम. ऑपरेशनल सिस्टम में एक ही सब्जेक्ट का डेटा, कंसिडर कस्टमर का डेटा या कंसिडर प्रोडक्ट का डेटा, एक ही टेबल से मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज डेटा वहां पे नॉर्मलाइज किया गया है. तो डेटा इज यूजुअली स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टेबल्स. Whereas यहाँ पे क्या होगा? You consider any one subject. Subject मतलब बिजनेस के रिलेटेड सब्जेक्ट. कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, रीजन हो गया. ओके, तो पूरा का पूरा डेटा एक ही टेबल में से मिलेगा. That's why it is called subject oriented collection. ओके, समझा आपको इसको सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? Yes, sir. Yes. Remember one more point. जैसे डेटाबेस में टेबल में डेटा स्टोर होता है, वैसे ही डेटा वेयरहाउस में भी टेबल ही रहेंगे, मगर वो टेबल अलग तरीके से डिजाइन किए गए हैं. यहाँ पे भी टेबल्स ही है, बट ये जो टेबल, कौन से टेबल होने चाहिए, उसका जो डिजाइन है वो अलग है. बराबर? फाइन. तो एवरी टेबल इन डेटा वेयरहाउस इज अबाउट वन बिजनेस सब्जेक्ट, and that's why it is called subject oriented. Okay, so आपको नोट डाउन करना है तो कर लो. Each table in data warehouse contains data related to particular business subject, such as customer, product, region, and so on. Can you please repeat the last point? Okay, each table in data warehouse contains data regarding particular business subject, such as customer, product, region, and so on. Okay, fine. So that's why we call this as subject oriented. Clear? Subject oriented term समझा सबको? Yes, sir. Yes. Okay. Second term, integrated. Okay, what do you mean by integrated? Okay, this is also important to understand. हमने डिस्कस किया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, अभी हम उसको डेटा वेयरहाउस बोलेंगे. डेटा वेयरहाउस विल गैदर डेटा फ्रॉम ऑल ऑपरेशनल सिस्टम. बराबर?
जैसे मैंने बोला कि एचआर का खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है, अकाउंट का खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है, प्रोडक्शन का खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है, मार्केटिंग का खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है, सबका अलग अलग खुद का ऑपरेशनल सिस्टम है और खुद के ऑपरेशनल डेटा है। वहां से सब जगह से डेटा उठा के डेटा वेयरहाउस में डालना है, ऐसे ही नहीं डाल सकते डायरेक्टली। यू हैव टू कन्वर्ट डेटा इनटू सुटेबल फॉर्म। Okay, you have to convert data into a form suitable for analysis. तो डेटा को डेटा वेयरहाउस में डालने से पहले उसको प्री प्रोसेस करना पड़ता है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड डेटा। इंटीग्रेटेड डेटा का मतलब क्या होता है? बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है, बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स है, 1 2 3 4, सब जगह से उठा के हमको डेटा डालना है डेटा वेयरहाउस में। ओके, ये सारा डेटा हमको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है फॉर एनालिसिस पर्पस। तो ऐसे ही उठा के नहीं डाल सकते, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो डेटा उठा रहे हैं उसको प्री प्रोसेस करेंगे पहले, एंड देन वी विल पुट इट इनटू डेटा वेयरहाउस। यहाँ से उठाएंगे उसको पहले करेंगे प्री प्रोसेस, देन विल पुट इट इनटू डेटा वेयरहाउस। सो डेटा व्हेन कलेक्टेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ सिस्टम्स and loaded into data warehouse, before you load data into data warehouse, उसको हम प्री प्रोसेस करेंगे और उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, दैट्स व्हाई इट इज इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ डेटा। इज द टर्म इंटीग्रेटेड क्लियर? Sir, could you repeat once again? Okay, better you note it down. Better you note it down. Data warehouse gathers data from multiple operational systems. Data warehouse gathers data from multiple operational systems. This data must be first converted. This data must be first converted into suitable form for analysis. This data pre-processing is called data transformation or data integration. Data transformation or data integration. Okay, now the term is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. The third term is non-volatile. What do you mean by non-volatile? वो तो सबको पता ही है non-volatile क्या होता है. Why the data in data warehouse is called non-volatile? Because हमने देखा differences में देखा कि data warehouse मतलब information system में once you upload the data is never deleted and rarely updated. It is always you perform read operation. Okay, so it means that once you load data into data warehouse, it is forever going to be there. It is forever going to be there. It is never going to be deleted. Okay, that's why it becomes non-volatile. With reference to that, we can say that data in operational system is kind of volatile because वो data delete भी हो सकता है, वो data update भी हो सकता है. बराबर? Clear? Fine. So write down this point. What about non-volatile data? Once the data is loaded into data warehouse, it is never deleted
it is never deleted and rarely updated. It is never deleted and rarely updated. Okay, so that's why it is non-volatile. Okay, everyone. This point. Sorry? Sir, I missed it. Could you repeat it? Non-volatile. Okay, I repeat. Once the data is loaded into data warehouse, once the data is loaded into data warehouse, it is never deleted. It is never deleted and rarely updated. Rarely updated. So data is non-volatile. Okay, समझा सबको ये term? Yes, sir. And the last term is time. Oops. मैंने गलती किया यहाँ पे. Oops, मैंने गलती किया. Time invariant. Huh? Time. One second. Time variant. Fine. Time variant. Correct. Invariant नहीं आएगा. Time variant. What is time variant? हमने डिस्कस किया. Historic data रहता है. What is historical data? Past data. मैंने बोला ना 5 साल पहले का डेटा, 3 साल पहले का डेटा, 2 साल पहले का डेटा, वो सारा डेटा आपको डेटा वेयरहाउस में मिलेगा. It means that if you go back in time and if you travel along the time, you will find the change in the data. डेटा कैसे इवॉल्व हुआ वो पूरा डेटा आपको मिलेगा डेटा वेयरहाउस में. ओके, लाइक बिजनेस विद पर्टिकुलर सप्लायर इंक्रीज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पहले हम वहां से कुछ ही रॉ मटेरियल लेते थे, अभी हमने वहां से ज्यादा रॉ मटेरियल लेना शुरू किया, फिर और ज्यादा लेना शुरू किया, फिर वापस कुछ डिक्लाइन हुआ. ओके, ये जो पूरा ट्रेंड है वो आपको डेटा वेयरहाउस में मिलेगा. ओके, तो व्हाई इट इज टाइम वेरिएंट? Because it contains historical data. पूरा ट्रेंड आपको मिलेगा, तो आप टाइम के साथ पूरा ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो उसका. ओके, दैट्स व्हाई इट इज टाइम वेरिएंट. ओके, सो द फोर्थ टर्म, टाइम वेरिएंट. The data warehouse contains historical data, so as to support trend analysis. Okay, so therefore it is time variant. Okay, so all the 4 terms are understood: subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data. Yes, sir. Okay, so this is formal definition. I repeat, data warehouse is subject oriented, integrated, non-volatile, time variant collection of data in support of decision making. All right, clear? Now let us look at the architecture of data warehouse. Sir, may I ask a question? Yes, sure. Sir, you said the data and it is never deleted. Yeah. So it must have an like infinite storage to store all the data, right? Or the data for considerable amount of time is not deleted. No. See, it is like infinite amount of storage. Now storage is very cheap. Okay, so in early days, data warehouse were not possible. But nowadays, like storage, you can consider it is like infinite amount of data you can store. Okay, like can you do you believe WhatsApp पे आप जो message वो लोग store करते हैं? Okay, when you change the device, you can take a backup. Yes. उनके पास इतना capacity है कि they can store this data for 200 years. 200 years का data they can store.
Now it is as good as infinite amount. ओके तो वो लोग क्या नॉर्मली डेटा वेयरहाउस में क्या करते हैं कि 200 साल पुराना डेटा किसी को नहीं लगता है एनालिसिस के लिए, बराबर? तो वो लोग क्या करते हैं, वो बैकअप में स्टोर कर देते हैं. ओके, द डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस is available actively in the data warehouse storage. Some data which is extremely old, 10 साल पुराना डेटा हो गया, 15 साल पुराना डेटा हो गया, उसको बैकअप में स्टोर करके रख देते हैं कि शायद इन फ्यूचर में किसी ने पूछा, किसी को लगा, then also it is available. But it is currently not actively not available in the data warehouse repository. Data warehouse repository जो हम अभी डिस्कस करेंगे उसमें लाइक एक्टिवली डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, 5 साल का डेटा, 6 साल का डेटा, अप टू लेट्स कंसीडर 10 साल तक का डेटा करंट एनालिसिस के लिए लग सकता है, उतना डेटा एक्टिवली स्टोर रहेगा. उससे पुराना डेटा दे विल कीप इट ऑन बैकअप स्टोरेज. किसी ने अगर मांगा तो निकालेंगे वैसा. क्लियर? So, can you just tell a short description about subject oriented, like exactly what you said? सब्जेक्ट ओरिएंटेड इसलिए होता है कि डेटा बिफोर यू स्टोर इनटू डेटा वेयरहाउस डीनॉर्मलाइज करना पड़ता है. डीनॉर्मलाइज इज ऑपोजिट टू नॉर्मलाइजेशन. मतलब क्या, अगर आपके ऑपरेशनल सिस्टम में कंसिडर दैट कस्टमर का डेटा 2 टेबल में है, कस्टमर का डेटा 2 टेबल में है. दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल. ओके, कस्टमर का नेम यहाँ पे है, कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे है, और कस्टमर का एड्रेस सपोज यहाँ पे स्टोर्ड है फॉर एग्जांपल. ओके, तो कस्टमर का जो डेटा है दैट इज स्टोर्ड इन 2 डिफरेंट टेबल्स बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस. अभी बिफोर यू स्टोर दिस डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, बिफोर यू लोड दिस डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, ये दोनों को मर्ज करके एक सिंगल टेबल कर देंगे. ओके, कस्टमर टेबल. ओके, नथिंग बट बिफोर यू लोड डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, कस्टमर के रिगार्डिंग जो भी डेटा है वो एक ही टेबल में से मिलना चाहिए. देयर कैन नॉट बी एनी अदर टेबल जहां पे कस्टमर का कोई भी डेटा हो. ओके, दिस टेबल विल हैव लॉट ऑफ रिडंडेंसी. लेट इट बी, रिडंडेंसी होने दो, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज हमको यहाँ पे ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना है. ओके, इट मीन्स दैट इट इज लाइक अ सब्जेक्ट. Customer is a kind of subject for the business. Another such subject it is what? Product. Okay, तो ये टेबल है कस्टमर के लिए. Okay, ये टेबल है प्रोडक्ट के लिए. Okay, similarly there is one more table which is talking about region. Okay, region. Okay, तो these are business subject. तो कस्टमर के टेबल में सारा कस्टमर का डेटा मिलेगा. Whatever you ask is here only. प्रोडक्ट के टेबल में सारा प्रोडक्ट का डेटा मिलेगा. व्हाटएवर यू आस्क इज हियर ओनली. ओके, यू डोंट हैव टू सर्च इन एनी अदर टेबल. क्लियर? सो इट इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट. एक टेबल एक सब्जेक्ट, दूसरा टेबल दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा टेबल तीसरा सब्जेक्ट. ओके, दीज आर बिजनेस सब्जेक्ट. ऑलराइट, दैट्स व्हाई इट इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड कलेक्शन. ओके, वेयरएज यहाँ पे ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड कलेक्शन, ये जो है ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड कलेक्शन बोल सकते हो आप, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया है, सो दैट ट्रांजैक्शंस रन एफिशिएंटली. राइट? नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. Thank you. या. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नाउ वी कैन टॉक अबाउट data warehouse system architecture. Again very important from exam point of view. 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. Okay, the question is what? Explain 3-level architecture of data warehouse. Okay, data warehouse system architecture. Okay, title लिखो data warehouse system architecture. Okay, so we'll see that it is like 3-level system architecture. Okay, fine. तो अभी आप खाली थोड़ा पॉइंट लिखोगे, डायग्राम अभी ड्रॉ मत करना.
ओके डायग्राम एक साथ लास्ट में ड्रॉ करना, ठीक है. आई विल बी ड्रॉइंग हियर पार्ट बाय पार्ट, बट यू विल बी ड्रॉइंग एट द एंड. ओके fine. So data warehouse architecture or data warehouse system component, there are total 6 components. Okay, data warehouse, there are total 6 components. Okay, first, okay, hello, can you hear me? Yes, sir. Okay, so there are total 6 data warehouse component. Okay, the first is data repository. Okay, from where data is collected. Okay, so first is data repository. Okay, there are 4 types of data. That type of data is loaded into data warehouse. Okay, it consists of different types of data. The first one is called production data. First one is called production data. Okay, it is normally also called data source component. Okay, repository मत बोलो, उसको बोलो आप data source component, जहां से data read करना है, which is more appropriate term, data source component. Okay, तो data source मतलब जहां से data read करना है data warehouse के अंदर. तो कौन से टाइप का data होता है? There are 4 types of data called production data, archive data, internal data, and external data. Okay, there are 4 types of data collected from data source called production data, archive data, internal data, and external data. Now let us understand each term one by one. Data source में क्या क्या होता है? So once again, data source क्या होता है? जहां से data read करना है data warehouse के अंदर. It is also repository. Okay, but from this repository data read करके data warehouse के अंदर डालना है. That's why with respect to data warehouse हम उसको बोल सकते हैं data source. तो पहला जो component है data source, there are 4 types of data sources: production, archived, internal, external. Now what is production data? The data that we talk about so far, operational system में जो data होता है, that is production data. Okay, so write down पहला component data source component. पहला component data source component. There are 4 types of data sources. There are 4 types of data sources. First, production data. Production data. The data used in operational systems. The data used in operational systems for day-to-day business activity. For day-to-day business activity.
is called production data. Is called production data. This data is produced by the organization itself. This data is produced by the organization itself. सर एक बार रिपीट करो, डिस्कनेक्ट हो गया. Yeah, sure. Production data, the data used in operational systems to carry out day-to-day business activity is called production data. Is called production data. This data is produced by the organization itself. ओके तो ये टर्म तो हमने ऑलरेडी देखा है पहला कि डेटा यूज्ड इन ऑपरेशनल सिस्टम. वी आल्सो कॉल दिस डेटा एज ऑपरेशनल डेटा. ऑपरेशनल डेटा. ओके तो ये जो सारा ऑपरेशनल डेटा है इन ऑल ऑपरेशनल सिस्टम्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन डेटा. ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ने जनरेट किया है. ओके दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोडक्शन डेटा. ओके it is the major source of data in data warehouse. Okay, I can say that 95% of data in data warehouse, 95% of data in data warehouse is production data, because main data which is collected into data warehouse is operational data only. Okay, so that is production data. It is the major source of data. You can write down this point. It is the major source of data. Okay, what is archived data? What is archived data? The data stored in backup file. The data stored in backup file is called archived data. The data stored in backup files of operational systems. The data stored in backup files of operational systems is called archived data. Okay, so this is also fetched and stored into data warehouse. Archived data सबको पता है ना, backup file जो होता है. Yes. Yeah. So operational system में जो backup files होते हैं उसके अंदर का डेटा भी फैच करके डेटा वेयरहाउस में डालते हैं. सो दैट इज कॉल्ड आर्काइव डेटा. ओके, नाउ व्हाट इज इंटरनल डेटा एंड एक्सटर्नल डेटा? ये थोड़ा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना. इंटरनल डेटा इज द डेटा जनरेटेड बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉई, इंडिविजुअल यूजर ऑफ ऑपरेशनल सिस्टम. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड वंस अगेन व्हाट इज इंटरनल डेटा. इंटरनल डेटा इज द डेटा जनरेटेड बाय individual user of operational system for their personal purpose. Okay, it is used for personal use. Okay, Give an example of internal data, please. Yeah, that's what it is. थोड़ा difficult है understand करना. Personal use मतलब not the private use. Okay, personal use मतलब consider एक accountant ले लो. Consider एक accountant ले लो. Accountant कोई bill generate कर रहा है. ओके, अकाउंटेंट कोई इनवॉइस जनरेट कर रहा है और वो टाइम पे उसको लगा कि ये कुछ इंफॉर्मेशन मेरे काम का हो सकता है इन फ्यूचर. ओके, मान लो ये कोई कस्टमर का कुछ तो डिटेल है कि ये कस्टमर का एड्रेस अभी चेंज हो गया है, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो ये डेटा जो है अकाउंटेंट ने अपने एक फाइल के अंदर स्टोर करके रखा है. ओके, सो सच डेटा which is generated and used by individual users of the operational system is called internal data. Okay, the difference between operational data and personal data or internal data is what? Operational data may flow across different operational system. Okay,
जैसे किसी का सैलरी रेज करना, दैट इज इन एचआर डिपार्टमेंट, बट रेज होके जब सैलरी कैलकुलेट करना है, दैट इज इन अकाउंट डिपार्टमेंट. So there has to be flow of data from one operational system to another operational system. बराबर, right? कोई प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ, okay, so that is maybe done by marketing system. Okay, that data also must be flow, that data must come to account section जब बिल जनरेट होता है. Okay, so it means that operational data is not used by one particular user for personal use. Okay, इंटरनल डेटा क्या होता है? इंटरनल डेटा जब काम करते करते कोई एम्प्लॉय को लगा कि ये डेटा मेरे कुछ काम का हो सकता है, ओके, तो इसने एक फाइल बनाया और वो फाइल के अंदर वो डेटा स्टोर करके रख दिया फॉर फ्यूचर रेफरेंस, फॉर हिज और हर ओन पर्पस. ओके, ये डेटा बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, बट समटाइम्स ये डेटा बहुत क्रूशियल भी हो सकता है. ओके, सो दैट डेटा इज ऑल्सो फैच्ड and stored into data warehouse. समझा इंटरनल डेटा क्या है? इंटरनल डेटा doesn't flow across operational system. It is used by, generated by individual user for their own personal purpose. Okay, it is not shared across departments. Like changing of account passwords and all. पासवर्ड तो वो सिस्टम्स में जाएगा. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम्स डिपार्टमेंट भी होता है जो सारे सिस्टम्स को मैनेज करता है, वो सब. ओके, जैसे मैंने बोला किसी का एड्रेस चेंज हो गया या किसी का फोन नंबर चेंज हो गया, टेम्पररी कोई आउट ऑफ स्टेशन है, फॉर एग्जांपल टेम्पररी कोई आउट ऑफ स्टेशन है, ओके, और कुछ डिलीवर किया वहां पे ऑनलाइन और वो रिटर्न आया, तो यहाँ पे उसको एंटर करना पड़ेगा कि ये डिलीवरी रिटर्न हुआ, द पर्सन इज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 10 days. उसको पता चला कि पर्सन इज आउट ऑफ स्टेशन फॉर 10 days. नाउ 10 दिन के बाद वापस वो डिलीवरी करना है, ओके, बट दैट इज नॉट इंसर्टेड इनटू ऑपरेशनल डेटा एनीवेयर, बिकॉज एनीवे डिलीवरी करना ही है, बट 10 दिन के बाद वापस वो डिलीवरी अटेम्प्ट करना है. समझा? सो दैट इज यूज्ड बाय, जनरेटेड बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन फॉर द इंटरनल पर्पस कि ये प्रोडक्ट का डिलीवरी अभी 10 दिन के बाद वापस से करना है. ओके, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है, उसमें कुछ अपडेट नहीं करना है, उसमें किसी और को इन्फॉर्म नहीं करना है. ओके, फाइन. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरनल डेटा, यूज्ड बाय इंडिविजुअल एम्प्लॉइज फॉर देयर ओन पर्पस. ओके, क्लियर? इंटरनल डेटा. Sir, can you just dictate what the points that we have to write in this, please? प्रोडक्शन डेटा लिखा ना आपने? Yes, sir. Production written, archive written. I'm talking. ओके, हाँ, इंटरनल डेटा. ओके, डेटा generated and used by, data generated and used by individual users of operational system, data generated and used by individual users of operational system for their own purpose, in their own personal files, is called internal data. Okay. Now fourth one is called external data. Now external data क्या होता है? पहले मैं डिफाइन कर लेता हूं. Data generated by some external agency regarding the business of the organization is called external data. Okay, I repeat, data generated by some external agency regarding business of the organization is called external data. Okay,
जैसे कोई मैगजीन है, वो लोग 4 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं. Okay, like all the business organizations in steel production. Okay, they are comparing all the steel manufacturers. Okay, तो वो टाटा का डेटा भी लेगा, अदानी का डेटा भी लेगा, ऐसे जितने भी लोग इन्वॉल्व है स्टील कंपनीज. ओके, लक्ष्मी मित्तल का डेटा भी लेंगे. ओके, और वो कंपेयर करेंगे. ओके, नाउ यू आर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका डेटा वहां पे कंपेयर हो रहा है किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ. नाउ ये जो डेटा है वो डेटा आपने जनरेट नहीं किया है, आपके ऑर्गेनाइजेशन जनरेट नहीं किया है, वो किसने जनरेट किया है? एक्सटर्नल एजेंसी ने जनरेट किया है. ओके, सिमिलरली आपका कोई बिजनेस पार्टनर है, तो बिजनेस पार्टनर के पास उनके खुद के सिस्टम्स रहेंगे, उसमें उनका खुद का डेटा रहेगा. बट सिंस दे आर योर बिजनेस पार्टनर, वो डेटा आपके काम में आ सकता है एनालिसिस के लिए. तो ये जो डेटा है विच इज नॉट जनरेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज क्रिएटेड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेटा. समझा एक्सटर्नल डेटा क्या होता है? Sir, can you repeat the sentence that you told? We have to write. Yeah. Okay, the data generated by external agencies, data generated by external agencies related to business of organization, is called external data. Normally such data is not available in the required form. Normally such data is not available in the required form. Okay, this last part is understood. It is not available in required form. Okay, you are creating your own data warehouse and you have certain things in your mind कि ये data ऐसे form में होना चाहिए, ये data ऐसे होना चाहिए. Okay, but the external data you have not created. It is created by some external agency. तो external agency जब data create करेगी तो वो तो अपने लिए करेगी, उसका form, उसका nature अलग रहेगा. Okay, now you are fetching that data, you are requesting that data कि हमको ये data आप दे दो, we will analyze for our own business purpose. Okay, तो वो आपको convert करके तो नहीं देंगे, वो आपको ऐसा का ऐसा डेटा देंगे. तो normally this data is never available in the form that you want because it is created by external agency. तो यहाँ पे आता है data transformation. Mainly यहाँ पे data transformation ज्यादा use होता है because it is never in the required form. So you have to convert that data into required form and then you have to load that data into your data warehouse. Okay, so that is called external data. Is data source component clear? क्या होता है? Yes, sir. Right. Okay. Fine. So यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ पैरेलली ड्रॉ करने का. Just a second. Data source component. तो ये जो डेटा सोर्स कंपोनेंट है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से डेटा ले रहा है. तो अगर मुझे उसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है तो मुझे करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस. ओके, यू विल नॉट ड्रॉ राइट नाउ. ओके, यू विल नॉट ड्रॉ राइट नाउ. कुछ डेटा टेबल के फॉर्म में है. ओके, कुछ डेटा एक्सेल शीट के फॉर्म में है. हो सकता है कुछ डेटा रिलेशनल डेटा या कुछ अदर काइंड का डेटा है. हो सकता है कुछ चार्ट के फॉर्म में भी मिल रहा है, पाई चार्ट वगैरह. एक्सटर्नल एजेंसी से ऐसे ही मिल सकता है. ओके, सो दिस इज आई एम कॉलिंग डेटा सोर्स. Okay, you are not supposed to draw right now, as I said. These are the data sources.
they are in different form. Okay, now अगर ये यहाँ से डेटा लेके हमको डेटा वेयरहाउस में डालना है, कुछ डेटा प्रोडक्शन डेटा है, कुछ डेटा इंटरनल डेटा है, कुछ डेटा एक्सटर्नल डेटा है. ओके, ये सारा डेटा उठा के हमको डेटा वेयरहाउस में डालना है. तो जैसे मैंने बोला, यू कैन नॉट डायरेक्टली पुट दिस डेटा इनटू डेटा वेयरहाउस, यू रिक्वायर प्री प्रोसेसिंग. बराबर. तो ये प्री प्रोसेसिंग करने के लिए हमको एक कंपोनेंट लगेगा, कंपोनेंट नंबर 2 कॉल्ड डेटा स्टेजिंग कंपोनेंट. डेटा स्टेजिंग. ओके, सो लेबल करो सेकंड, डेटा स्टेजिंग. ओके, तो डेटा स्टेजिंग क्या होता है? डेटा स्टेजिंग मतलब व्हाट यू विल डू इज, ऑल दिस डेटा, जहां जहां से आपको डेटा लेना है, all this data is extracted and temporarily stored in something called data staging area. Data staging area. Okay, यहाँ पे आप हो सकता है कि यहाँ पे आप ये डेटा जो है टेम्पोररीली स्टोर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस. ओके, हो सकता है डेटा आप स्टोर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ सम फ्लैट फाइल्स. ओके, यहाँ पे हो सकता है रिलेशनल डेटाबेस भी हो. ओके, यहाँ पे आप क्या करोगे, डेटा को प्री प्रोसेस करोगे, डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे. सो डेटा ट्रांसफॉर्म. ओके, यहां से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एंड देन फाइनली प्री प्रोसेस होने के बाद यहां से आप डेटा को लोड करोगे. ओके, तो ये जो पूरा स्टेजिंग एरिया है दैट इज रिलेटेड टू ETL प्रोसेस. दैट इज रिलेटेड टू ETL प्रोसेस. ओके, आई रिपीट, डेटा स्टेजिंग का पर्पस क्या है? डेटा को सोर्स में से उठाने का, दैट इज एक्सट्रैक्ट करो, टेम्पररीली यहां पे स्टोर करो रिलेशनल डेटाबेस में या फ्लैट फाइल में या एक्सेल फाइल में, उसके ऊपर वेरियस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, कन्वर्ट डेटा इनटू सूटेबल फॉर्म एंड देन फाइनली डेटा को लोड करो. ओके, सो दैट इज कॉल्ड ETL प्रोसेस. ओके, सो नोट डाउन, डेटा स्टेजिंग is related to ETL process. Data staging is related to ETL process, that is extraction, transformation and loading. Extraction, transformation and loading. The required data is extracted from data sources. The required data is extracted from data sources and temporarily stored in staging area, in terms of relational database, spreadsheets, or flat files for pre-processing purpose. Can you repeat, please? Okay, what exactly? The required data is extracted from data sources and temporarily stored in staging area, in terms of relational database, spreadsheets, or flat files
for pre-processing purpose? So it's flat files, FLAT flat files, right? Yeah, flat. Normal Okay. text file, अपना जो normal text file होता है उसको flat file बोलते हैं. It is not in any particular structure. जैसे मन में आया वैसे वहां पे आप डेटा स्टोर कर सकते हो. That's why it is called flat file. It has no proper organization or structure. बराबर? So can you repeat the names of data sources, please? मैंने name of data sources कहाँ पे बोला यहाँ पे? What exactly you want me to repeat? Stored in staging area in the form of relational database, spreadsheets, Excel file जो बोलते हैं ना, that is spreadsheets, or flat files for pre-processing purpose. Okay, यहां तक हो गया सबका? Yes, sir. हाँ, स्टेजिंग एरिया का पर्पस समझ में आया. स्टेजिंग एरिया का पर्पस क्या है? सारे डेटा सोर्सेज जो भी है, जहां से भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, प्रोडक्शन डेटा हो, इंटरनल डेटा हो, एक्सटर्नल डेटा हो, जो भी डेटा है, सारा डेटा जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करो, टेम्पररी यहाँ पे स्टोर करो. ओके, सो टेम्पररी स्टोरेज है यहाँ पे, परमानेंट स्टोरेज नहीं है. टेम्पररी स्टोर करो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस और स्प्रेडशीट, जो भी कन्वीनियंट है, जो भी सुटेबल है. ओके, मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्लैट फाइल, so that you can perform pre-processing. So main purpose of staging area is to extract data from various sources, perform pre-processing and get the data ready for loading. समझा सबको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yeah, write down, various data transformations are applied. Various data transformations are applied to convert data into various data transformations are applied to convert data into form suitable for analysis. To convert data into form suitable for analysis. This preprocessed data is then loaded into data warehouse. This preprocessed data is then loaded into data warehouse. This loading is of two types. This loading is of two types. Okay, called initial loading and incremental loading. Initial loading and incremental loading. Okay, so this loading is of two types, initial loading and incremental loading. सबका लिख के हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, what is initial loading and what is incremental loading? वो थोड़ा समझना जरूरी है. Okay, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, डे 1 जब उन्होंने चालू किया, सपोज एक स्टार्टअप चालू हुआ, ओके, डे 1, डे 2, डे 3, they will not implement data warehouse initially. ओके, क्योंकि उनके पास इतना डेटा ही नहीं है एनालाइज करने के लिए. डेटा एनालाइज करने के लिए आपको 2-3 साल वो बिजनेस में रहना पड़ेगा. ओके, आपके पास इतना सारा डेटा आ चुका है which you can perform fruitful analysis and can be used for decision making. बराबर? एकदम शुरू में जब स्टार्टअप चालू होता है तो आपके पास डेटा ही नहीं है, एनालाइज क्या करोगे आप?
बराबर। तो डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास पहले उतना डेटा आना चाहिए, तो आपको वो बिजनेस में रहना पड़ेगा 2-3 साल। इतना डेटा एक्यूमुलेट हो गया आपके पास, पूरे बैकअप फाइल्स में अवेलेबल है डेटा। नाउ यू इंप्लीमेंट डेटा वेयरहाउस, बराबर। तो नाउ जब डेटा वेयरहाउस इंप्लीमेंट किया, तो इनिशियली डेटा वेयरहाउस के अंदर तो कुछ डेटा है ही नहीं। डेटा कहां पे है अपना? या तो ऑपरेशनल सिस्टम में है या तो बैकअप फाइल्स में है। हमने जो आर्काइव डेटा यूज किया ना, वो है। तो पहली बार जब डेटा आप डेटा वेयरहाउस में लोड करोगे, व्हेन डेटा वेयरहाउस इज इंप्लीमेंटेड, कहां से डेटा आएगा? आर्काइव फाइल में से डेटा आएगा, बैकअप फाइल में से डेटा आएगा, और ऑपरेशनल सिस्टम में अभी जो करंट डेटा है वो डेटा आएगा। वो सारा का सारा डेटा फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर लोडिंग इनटू डेटा वेयरहाउस, सो इट इज कॉल्ड इनिशियल लोडिंग। इनिशियल लोडिंग समझ में आया सबको? इनिशियल लोडिंग समझा सबको? Yes, sir. Okay, so when data is loaded into data warehouse for the very first time from all backup files, archive data and operational systems का data, that is called initial loading. ठीक है, initial loading हो गया, आपका data warehouse now is in function, वो चालू हो गया, बराबर। उसमें से एनालिसिस चालू हो गया। अभी भी आपका ऑपरेशनल सिस्टम वर्किंग है, ऑपरेशनल सिस्टम में कुछ डेटा जनरेट हुआ, इंटरनल फाइल में कुछ डेटा जनरेट हुआ, एक्सटर्नल डेटा कुछ जनरेट हुआ। अभी क्या करना है आपको? एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डेटा विल बी फेच्ड एंड लोडेड इनटू डेटा वेयरहाउस। थोड़ा डेटा आज लोड किया, फिर कल लोड किया, कुछ डेटा एक वीक के बाद लोड किया, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल लोडिंग। तो इंक्रीमेंटल लोडिंग क्या होता है? Once your data warehouse started functioning frequently on an ongoing basis, data is extracted, transformed and loaded into data warehouse. That is called incremental loading. Initial loading एक ही बार होता है, for the first time. For the first time data loaded into data warehouse, that is called initial loading. Now ongoing basis पे क्या होता है? As and when required, data is fetched, that is extracted, transformed and loaded into data warehouse, that is called incremental loading. सबको ये दो टाइप के लोडिंग समझ में आ गए? इनिशियल लोडिंग क्या होता है और इंक्रीमेंटल लोडिंग क्या होता है, बराबर। ओके, क्लियर? Yes, sir. ओके फाइन, सो दैट इज डेटा लोडिंग। ओके, नाउ ये डेटा लोड कहां पे होता है? ओके, तो उसके लिए हमको we don't have to write this. Okay, if you want you can write down initial loading, incremental loading, इतना आपने लिखा। Okay, लिखो initial loading क्या होता है? When the data warehouse is implemented, when the data warehouse is implemented, and the data is loaded into data warehouse for the first time, when the data warehouse is implemented and data is loaded for the first time from all possible sources, it is called initial loading. It is called initial loading. Okay. Now incremental loading. What is incremental loading? Once the data warehouse starts functioning, periodically required data is extracted, transformed
and loaded into data warehouse. Periodically, required data is extracted, transformed, and loaded into data warehouse. It happens on regular basis. It happens on regular basis at a fixed frequency. At a fixed frequency. Okay, so this type of loading is called incremental loading. Okay, समझ में आया सबको incremental loading क्या होता है? Did you say in last it happens on fixed frequency? Right. It happens at a fixed frequency. Okay, तो कुछ डेटा डेली लोड करना जरूरी होता है, कुछ डेटा वीक में एक बार लोड करना जरूरी होता है, कुछ डेटा मंथ में एक बार लोड करना, जैसे सैलरी कैलकुलेशन, तो सैलरी रोज तो नहीं होता है ना, सैलरी मंथ में एक ही बार होता है, तो उसका एक्सट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मंथ में एक बार. समझा? Yes. या सो वो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, वो फ्रीक्वेंसी पे वो डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है. सो इट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल लोडिंग. बराबर? ठीक है. अभी ये लोड होता कहां पे है, तो उसके लिए हमको चाहिए थर्ड कंपोनेंट, कंपोनेंट नंबर 3, डेटा स्टोरेज. डेटा स्टोरेज कंपोनेंट. Okay, note down data storage component. It is a separate repository of data. It is a separate repository of data in data warehouse. I repeat, it is a separate repository of data in data warehouse. The data is organized. The data is organized for efficient analysis. The data is organized for efficient analysis using multi-dimensional data model. Using multi-dimensional data model. The data stored in data storage. The data stored in data storage provides organizational view of data. Organizational view of data. So it is also called EDW. So it is also called EDW, enterprise-wide data warehouse. Okay, EDW stands for enterprise-wide data warehouse. It also stores data about data. It also stores data about data.
Okay, so this is अपना data storage component. Okay, तो सारा का सारा डेटा सोर्स में से एक्सट्रैक्ट होता है, टेम्पररीली स्टेजिंग एरिया में रहता है जहां पे ट्रांसफॉर्म होता है, प्री प्रोसेस होता है, एंड देन लोड होता है डेटा स्टोरेज में, विच इज अ सेपरेट रिपोजिटरी ऑफ डेटा. ओके, और यहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा मॉडल, नॉट यूजिंग ईआर मॉडल. ओके, और उसको डेटा अबाउट डेटा भी स्टोर करना पड़ेगा. विल कम बैक टू दिस मेटा डेटा. समझ में आ गया यहां तक डेटा स्टोरेज? ओके, नाउ योर डेटा इज रेडी. नाउ योर डेटा इज रेडी. ओके, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट it is providing organizational view. Organizational view का क्या मतलब है? Have you understood this term? Enterprise wide data warehouse का मतलब क्या होता है? Have you understood this term? Enterprise wide data warehouse क्या होता है? Or you want me to repeat? So repeat, please. Yes, sure. See, try to understand. ये important term है. Enterprise wide data warehouse. Organizational view मतलब क्या है? As you can see in the diagram, सारे के सारे डेटा सोर्सेज जो है वो सारे डेटा सोर्सेज, बीट प्रोडक्शन डेटा, इंटरनल डेटा वो तो छोड़ो, बीट एचआर का डेटा, बीट अकाउंट्स का डेटा, बीट प्रोडक्शन का डेटा, बीट मार्केटिंग का डेटा, कोई भी सारा का सारा डेटा उठा के एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म करके हमने यहाँ पे डाला है. मतलब यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा स्टोरेज में यहाँ पे जो डेटा है, दिस डेटा इज फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस. इसके अंदर से पूरे के पूरा एंटरप्राइज का डेटा मिलेगा आपको, विच इज वेरी बिग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स. वो प्रॉब्लम है. Now, if I consider one particular user of the data warehouse, let's say sales manager, या पकड़ लो HR मैनेजर, ओके, या पकड़ लो मार्केटिंग मैनेजर, तो ये जो मैं यूजर का नाम ले रहा हूं, दे आर मैनेजर लेवल, दे वांट टू परफॉर्म सम एनालिसिस. बट अभी जो HR मैनेजर है उसको मार्केटिंग का डेटा का कुछ लेना देना नहीं है, उसको अकाउंट के डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, उसको प्रोडक्शन के डेटा से कुछ लेना देना. ही इज कंसर्न विद HR related data from EDW. Okay, अभी accounts manager को पकड़ लो, accounts manager is concerned with only accounts related data from EDW. So what I am trying to say, many users of data warehouse system, they required only very specific data from the organization for analysis, not for transaction processing, for analysis, but only from very specific part of it. The particular user doesn't require the entire EDW. पूरा EDW किसी को नहीं लगता है यूजुअली. शायद लगता होगा CEO को लगता होगा, who is above everyone, या मैनेजिंग डायरेक्टर को लगता होगा. Okay, but not account manager, okay, not marketing manager or not HR manager. There are many users of data warehouse system. They do not require the entire data warehouse for analysis. ठीक है, प्रॉब्लम समझा? EDW क्या है वो समझा अभी? Yes, sir. Right. Okay, so note down this point. आपने ऑलरेडी लिखा ना एंटरप्राइज वाइड डेटा वेयरहाउस? Have you written this term? Yes, sir. Till metadata. Okay, तो EDW का टर्म लिखा ना आपने? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So now write down the next point. Most of the users of data warehouse do not require entire EDW for analysis purpose. Entire EDW for analysis purpose.
ओके, लिखा? Yes. Okay, now what to do? Entire EDW for Analysis purpose. The EDW is too big and very complex. The EDW is too big and very complex for individual users. EDW is too big and very complex for individual users. ओके, लिखा सबने? समझ में आया यहां तक? EDW का प्रॉब्लम क्या है? Yes, sir. ओके, हाँ, किसी को डाउट है? Sir, what is the last word that you said? The entire EDW is too big and very complex for इंडिविजुअल यूजर. जैसे अकाउंट मैनेजर ले लो या HR मैनेजर ले लो, जिसको डेटा एनालाइज करना है, बट नॉट द एंटायर EDW. द पर्सन इज कंसर्न विद पर्टिकुलर डिपार्टमेंट. HR मैनेजर है तो उसको HR का ही डेटा चाहिए, उसको प्रोडक्शन डेटा से कुछ लेना देना नहीं है. समझा? Yes, sir. And sir, did you say anything about metadata? No, it is just stored in the data storage component. Along with EDW, metadata is also stored. We'll come back to metadata. Wait for a while. Okay, sir. Right. Now, what is the solution to this problem? HR मैनेजर को पूरा EDW देने की कोई जरूरत नहीं है. मार्केटिंग मैनेजर को पूरा EDW देने की कोई जरूरत नहीं है. It is very big and the person doesn't require whole EDW. ओके, तो हम क्या करेंगे? ये जो EDW है, जो बहुत बड़ा है और बहुत कॉम्प्लेक्स है फॉर इंडिविजुअल यूजर, उसको हम ब्रेक डाउन कर देंगे, उसको हम तोड़ देंगे और तोड़ के क्या करेंगे? डिपार्टमेंट वाइज उसको डिवाइड कर देंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे? एक छोटा सा स्टोरेज बनाएंगे, ओके, जिसके अंदर HR का डेटा है, बट स्टोर्ड मल्टी डायमेंशनली. हाँ, it is not ER diagram wise, it is multi-dimensional. Okay, nothing but it is part of EDW, but now store data only for a particular department. Okay, और दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा है फॉर एनालिसिस, और तीसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें वापस डेटा है फॉर एनालिसिस फॉर अनदर डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. Okay, each of this part is called data mart. Okay, very important term, data mart. Data mart क्या होता है और क्यों होता है? तो data mart पहले क्या होता है? Data mart contains the same data as EDW for individual department. Okay, तो यहां पे भी डेटा ऐसे ही ऑर्गेनाइज किया है which is suitable for analysis, but it contains data regarding to particular department. ओके, और ऐसा क्यों किया है? बिकॉज एंटायर EDW इज वेरी बिग एंड वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिविजुअल यूजर. ओके, तो अभी हम क्या करेंगे? एक डेटा मार्ट बनाएंगे और वो हम दे देंगे HR को, ये तुम्हारा डेटा मार्ट है. ओके, दूसरा डेटा मार्ट बनाएंगे और हम उसको दे देंगे अकाउंट्स को, उसको बोलेंगे ये तुम्हारा डेटा मार्ट है. ऐसे करते करते जितने भी ऐसे यूजर्स है जिनको स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का ही डेटा लगता है फ्रॉम EDW, उनके लिए हम अलग अलग डेटा मार्ट बना देंगे. ठीक है, तो इससे आसानी क्या होगी? नाउ HR मैनेजर कैन परफॉर्म एनालिसिस ऑफ HR डेटा ओनली बाय लुकिंग एट दिस डेटा मार्ट. उसको दूसरे डेटा से कुछ लेना देना नहीं. अकाउंट मैनेजर कैन परफॉर्म एनालिसिस ऑफ ओनली अकाउंट डेटा बाय लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर डेटा मार्ट. समझ में आया डेटा मार्ट क्या होता है और क्यों होता है? Yes, sir. Understood. यस, वेरी तो गुड. डेटा मार्ट कहाँ होता है? EDW के अंदर? नहीं, EDW यहाँ पे है. EDW में से हम क्रिएट करेंगे. ओके, इट इज समथिंग वेरी सिमिलर टू व्यू. आपको व्यू का कंसेप्ट पता है? डेटाबेस में व्यू क्या होता है? Yes, sir. हाँ, इट इज सिमिलर टू दैट. ओनली डिफरेंस इज दैट व्यू इज लॉजिकल, डेटा मार्ट इज फिजिकल.
अभी थोड़े कंफ्यूज हो गए क्या आप लोग? व्यू लॉजिकल होता है का मतलब क्या? हाँ, व्यू लॉजिकल होता है का मतलब क्या? डेटा मतलब प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, डेटा एक्चुअली टेबल में रहता है, बराबर, उसमें से व्यू क्रिएट करते हैं। तो यूजर जब भी क्वेरी डालेगा वो व्यू का नाम लेके, क्वेरी एक्चुअली कहां पे रन होगा? वो टेबल पे रन होगा। तो टेबल में से अलग अलग व्यू निकाले हैं। ये हम बात कर रहे हैं डेटाबेस की, हाँ, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। ओके, दिस एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट। ये व्यू एक्चुअली लॉजिकल है, बट यूजर को लगता है कि उसको ये व्यू दिया गया है। तो यूजर जब क्वेरी डालेगा इसका नाम डाल के, एक्चुअली, समझा? Sir, can you repeat it? My connection was broken. Okay, data, the difference between data mart and view, the concept is similar to view. ओके, डिफरेंस क्या है? डेटा मार्ट फिजिकली होता है, यहाँ पे जो डेटाबेस में व्यू का कंसेप्ट है वो लॉजिकल होता है। मतलब क्या? एक ही टेबल में से अलग अलग व्यू क्रिएट कर सकते हैं हम, और एक एक यूजर को दे सकते हैं। ओके, तो ये यूजर जो 1 है उसको वही पार्ट दिखेगा ये टेबल का जो ये व्यू के अंदर है। ये यूजर 2 को वही पार्ट दिखेगा ये टेबल का जो ये व्यू के अंदर है, और ये यूजर को वही पार्ट दिखेगा ये टेबल का जो ये व्यू के अंदर है, बराबर। अभी जब यूजर क्वेरी फायर करेगा ये व्यू को लेके, व्यू एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट, क्वेरी रन होता है टेबल के ऊपर, बराबर। दैट इज व्हाई द व्यू इज लॉजिकल, वो फिजिकली नहीं होता है। ओके, इन डेटाबेस सिस्टम queries are executed only on the table, not on the view. ठीक है, यूजर्स क्वेरी आर एग्जीक्यूटेड ऑन द टेबल नॉट ऑन द व्यू, बराबर, समझा? whereas in data mart whereas in data mart these data marts are storage physically, यहां से डेटा उठा के यहां पे डेटा डालते हैं एचआर का, यहां से डेटा उठा के डेटा मार्ट ऑफ अकाउंट जो है उसमें डालते हैं फिजिकली। ओके, फाइन, सो दे आर फिजिकली डिफरेंट स्टोरेज। व्यू इज ओनली लॉजिकल, बट कंसेप्ट सिमिलर है। कंसेप्ट सिमिलर कैसे है? यहां पे वही डेटा है जो एचआर को लगता है, यहां पे वही डेटा है जो अकाउंट्स को लगता है। मतलब अभी एचआर मैनेजर को पूरा ईडीडब्ल्यू देखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे ये यूजर को पूरा टेबल देखने की जरूरत नहीं है, उसको खाली ये व्यू देखना है। समझा सबको? इज एवरीवन क्लियर डेटा मार्ट क्या है? Yes, sir. ओके, अगर नहीं समझाए तो वापस से बोलो, आई विल रिपीट बिकॉज बट जब यहाँ पे क्वेरी फायर होगी तो वो yes एक पर्टिकुलर डेटा मार्ट में ही चलेगी ना, वो एडीडब्ल्यू। yes that's what I'm saying. Okay, that's what I'm saying. ओके, तो वो क्वेरी चलेगी डेटा मार्ट में। अगर एचआर मैनेजर ने क्वेरी डाला है, सो दैट विल एग्जीक्यूट अगेंस्ट द डेटा इन डेटा मार्ट ऑफ एचआर, उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, बराबर, क्योंकि यही डेटा उठा के हमने यहाँ पे डाला हुआ है। सिमिलरली अकाउंट मैनेजर का क्वेरी, एनालिसिस का क्वेरी यहाँ पे रन होगा, उसको यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। ओके, बट ऐसा हो सकता है कि देयर इज सम यूजर हु रिक्वायर्स ऑल दिस डेटा, तो उसका क्वेरी यहाँ पे चलेगा, बराबर। समझ में आया मीन्स ये सबको? रिडंडेंट पार्ट है ना सर, लाइक ईडीडब्ल्यू में भी है और हाँ, रिडंडेंट है, रिडंडेंट है। रिडंडेंसी इज नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, बिकॉज यहाँ पे भी डेटा रीड ही कर रहे हो, एनालाइज ही करना है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करना ही नहीं है, बराबर, ओके सर। राइट। तो दैट्स व्हाई डेटा मार्ट इज क्रिएटेड, कि एचआर मैनेजर का क्वेरी यहाँ पे डालोगे तो बहुत टाइम लेगा, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ओके, तो उससे अच्छा है एचआर का डेटा उठा के उसको दे दो वहां पे डेटा मार्ट में, तो उसका क्वेरी इधर ही रन होगा, तो इट विल एक्सेस फास्टर। इट इज रिडंडेंट। क्लियर? यस सर। सर ओके, मीन्स अभी अगर लाइक चेंजेस डेटा मार्ट पे तो होगे नहीं ना डेटा में? मैंने क्या बोला? रीड ही करना है, डेटा को अपडेट रेयरली करना है, रेयरली,
लाइक थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन होने के बाद शायद एक आधा ऑपरेशन अपडेट होगा, नॉर्मली अपडेट होता ही नहीं है कुछ। वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, बट यस हाँ, वो करना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि एवरी नाउ एंड देन डेटा अपडेट हो रहा है, डेटा डिलीट हो रहा है, उसको यहाँ पे इमीडिएटली रिफ्लेक्ट करना है, वरना उसको एररनियस डेटा मिलेगा। वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, वो समझा आपको? यस सर। या ओके, इट इज रीड एनालाइज, रीड एनालाइज, रीड एनालाइज। तो 95 to 98% रीड ही होता है, हार्डली कभी कोई डेटा डिलीट हुआ तो हुआ, विच इज नॉर्मली नॉट द केस। हार्डली कभी डिलीट तो होता ही नहीं है, हार्डली कभी अपडेट हुआ तो हुआ। हम देखेंगे अपडेट कब होता है, जब हम ETL प्रोसेस डिस्कस करेंगे, दैट टाइम विल सी अपडेट कब करना पड़ता है, बराबर? राइट, सो यहाँ पे रिडंडेंसी इज नॉट गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम, लेट इट बी रिडंडेंट। रिडंडेंसी यहाँ पे उल्टा अच्छा होता है, फास्टर डेटा एक्सेस होता है, बराबर? तो अगर कोई ऐसा क्वेरी आया, लेट्स से इट इज फायर्ड बाय CEO, नाउ CEO को तो HR भी देखना पड़ता है, उसको अकाउंट भी देखना पड़ता है, उसको मार्केटिंग भी देखना पड़ता है, तो हो सकता है उसका क्वेरी ऐसा है जो सारा का सारा डेटा रिक्वायर करता है। ओके, दैट क्वेरी विल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट EDW। अदरवाइज अगर HR मैनेजर ने क्वेरी डाला तो वो इधर ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? यस सर। ओके, नाउ तो ये हो गया डेटा स्टोरेज कंपोनेंट, बराबर? अभी नेक्स्ट कंपोनेंट आता है, ये डेटा हम प्रोवाइड कैसे करेंगे यूजर को। ओके, जैसे मैंने नाम लिया मतलब टाइप लिया, HR मैनेजर, CEO, अकाउंट मैनेजर, आर दे टेक्निकल पर्सन? डू दे अंडरस्टैंड डेटा वेयरहाउस? नो सर। डू दे अंडरस्टैंड SQL? नथिंग, दे आर बिजनेस यूजर्स। उनको एनालाइज करना आता है, उनको पाई चार्ट समझता है, ओके, उनको क्वेरी नहीं समझता है, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस टेक्निकलिटी। तो उनको ये डेटा कैसे प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको इजीली एनालाइज करने को आए? ओके, तो उसके लिए एक कंपोनेंट लगता है जिसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट। सो कंपोनेंट नंबर 4, इंफॉर्मेशन डिलीवरी। Information delivery component. It is responsible for, write down. Okay, आपने डेटा मार्ट का लिखा है ना सबने? No, sir. ओ पहले वो लिखो तो। कोई मुझे बताएगा लास्ट आपने क्या लिखा? बिकॉज आई The EDW is too big and very complex for individual users. oh, then we have to write about data mart. Please write down, huh? Please write down, it is important. Yes, Okay, sir. yeah. To reduce complexity of data access, to reduce complexity Is of the data fourth access. or is this continuous? No, ये डेटा स्टोरेज के अंदर ही है। मुझे लगा डेटा मार्ट का आपने लिख लिया, सो आई वाज गोइंग अहेड विद इंफॉर्मेशन डिलीवरी। ओके, आई रिपीट, डेटा स्टोरेज के अंदर ही कंटिन्यू करो। टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा एक्सेस, department wise data marts are created. To reduce complexity of data access, department wise data marts are created. Each data mart contains data similar to EDW. Each data mart contains data similar to EDW, but for a specific department. So a data mart provides departmental view of data. Data mart provides departmental view of data.
ओके, सो ये लाइन हाईलाइट करके रखो। इसका मतलब क्या हुआ? डेटा मार्ट में सेम डेटा है, इट इज ऑल्सो फॉर एनालिसिस पर्पज ओनली, इट इज ऑल्सो स्टोर्ड मल्टी डायमेंशनली, ओके, बट इट इज फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। तो पहले आपने क्या लिखा ईडीडब्ल्यू के बारे में? इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल व्यू, बराबर, इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल व्यू, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का व्यू मिलता है अगर आप देखोगे ईडीडब्ल्यू में, बट आप देखोगे डेटा मार्ट में तो आपको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डेटा दिखेगा। सो इट प्रोवाइड्स departmental view of data, whereas EDW provides organizational view of data. समझा सबको? Sir, can you repeat this specific point? Each data mart contains data Similar to EDW, but for a specific department. Thank you, sir. Okay, सबको समझा है ना ये पार्ट? This is very important term. Okay, Yes. very good. Okay, हाँ, अभी हम बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन डिलीवरी क्या होता है। तो अभी एचआर मैनेजर डेटा मार्ट से डेटा एक्सेस करना है उसको, या अकाउंट मैनेजर को अकाउंट डेटा मार्ट से डेटा एक्सेस करना है, या सीईओ को ईडीडब्ल्यू से डेटा एक्सेस करना है। दे आर नॉट टेक्निकल पीपल, ओके, सो दे डोंट अंडरस्टैंड एनी टेक्निकलिटी। उनको हमें रिपोर्ट्स जनरेट करने की फैसिलिटी, ओके, उनको एक यूजर इंटरफेस देना पड़ता है, बराबर। सो उनको अलग अलग तरीके का एनालिसिस करने की फैसिलिटी देनी पड़ती है। ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ, that is the responsibility of information delivery component. So now you write down point number 4, information delivery. Information delivery, it is responsible for delivering required data in a specified format. So can you repeat from the start? Information delivery, it is responsible for providing required data in specified format to various users. It includes various methods. For delivering the information, such as ad hoc query, ad hoc reports, Adverb or adobe? ad hoc. I repeat, I write down here, it is ad hoc, need based. Ad hoc queries, ad hoc reports, multi-dimensional and cross-dimensional analysis, various OLAP operations, etc. Yes. Sir, can you please Action repeat operations, after right? ad hoc report?
ad hoc queries, ad hoc reports, multi-dimensional and cross-dimensional analysis, multi-dimensional and cross-dimensional analysis, Cross-dimensional? yeah, cross-dimensional, across the dimensions, cross-dimensional, multi-dimensional analysis, various OLAP operations, etc. Thanks, sir. Yeah, okay. So there are different methods. Okay, so these are various methods that you have listed down. Okay, so using these methods, this data will be provided to the users. Okay, this data will be provided to the users. Okay, तो यहाँ पे जो data है, वो access करके user क्या कर सकता है? So here you require some systems that work on the top of data warehouse system, such as data mining is one of them. Data mining can work on the top of data warehouse. Okay, then executives information system, EIS. Then we have decision support system, DSS. Then we have information retrieval and management system, IRM. Okay, and so on. So what are this? What I have listed is these are different systems that can perform detailed analysis of the data, and each of this system require data in various form. Like किसी को क्रॉस डायमेंशनल एनालिसिस लगेगा, किसी को मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस लगेगा, कोई सिस्टम को एडॉक रिपोर्ट जनरेट करने हैं, किसी को ग्राफ जनरेट करना है, राइट, किसी को लाइन ग्राफ जनरेट करना है, एंड सो ऑन. ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट. इंफॉर्मेशन डिलीवरी में यहाँ पे लिखता हूं. ओके, वो बेसिकली ये जो मैंने एरोज यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन डिलीवरी टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर्स, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम्स. ओके, सो अगर डेटा माइनिंग सिस्टम है तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा लगता है. EIS सिस्टम है तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा लगता है. IRM है तो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में डेटा लगता है. तो दैट इज द जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट टू प्रोवाइड डेटा फ्रॉम डेटा मार्ट और EDW in required format to all these systems, or maybe some ad hoc users. Some users भी हो सकते हैं that directly fire the query. Okay, fine. So that is the job of information delivery. Fine. समझा information delivery का purpose क्या है? Yes. Okay. Now come to point number 5, component number 5, that is called metadata component. Metadata component. So Okay. information delivery is relatively small to every other. So it is this much only, 4-5 lines. Why you are going by number of lines that you written? Because in other things there is a lot of information regarding that, regarding the components. In the information delivery, it is a little bit of information about that. So like what we can say, it is basically a kind of user interface or application interface. हम जो API वगैरह बोलते हैं ना, वो सब आता है यहाँ पे. Okay, so somehow what is the purpose of information delivery component? Somehow हमने यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया है EDW में या डेटा मार्ट में मल्टी डायमेंशनली, विच इज सुटेबल फॉर एनालिसिस, ये डेटा हम यूजर को कैसे दे. ओके, तो हो सकता है यूजर डायरेक्टली कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहता है, या हो सकता है कि यूजर और कोई सिस्टम यूज कर रहा हो ऑन द टॉप ऑफ डेटा वेयरहाउस सिस्टम. तो इंफॉर्मेशन डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो भी फॉर्मेट में डेटा चाहिए वो फॉर्मेट में डेटा डिलीवर करना है. दैट्स इट. दैट इज अबाउट इंफॉर्मेशन डिलीवरी. बराबर? यस सर. Okay, now metadata, point number 5, component number 5. Okay, note down, it is data about data. It is data about data in data warehouse system. It is data about data in data warehouse system.
ओके जैसे डेटाबेस में होता है डेटा डिक्शनरी, बराबर, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हमको लगता है डेटा अबाउट डेटा वेयरहाउस का डेटा, so that is also called here metadata. It is of three types. Write down, it is of three types. First, operational metadata. Operational metadata. It is data about operational systems and sources. It is data about operational systems and sources. ओके तो सबसे पहले डेटा वेयरहाउस में पता होना चाहिए कि जो डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए वो कहां पे है, राइट, वो कौन से सिस्टम में है, डेटा सोर्स में एग्जैक्टली कहां पे है, ये टेबल में है कि वो टेबल में है कि वो स्प्रेडशीट में है, कहां पे है, वो डेटा होना जरूरी है। सो कौन सा डेटा कहां पे है वो इंफॉर्मेशन इज ऑपरेशनल मेटाडेटा। समझा ऑपरेशनल मेटाडेटा क्या है? Is it clear? Yes, sir. Right. Second, ETL metadata. ETL metadata. It is data about ETL process. It is data about ETL process. It includes the type of extraction. It includes the type of extraction, extraction cycle, type of transformations, loading methods, etc. Loading methods, etc. Okay, now try to understand ETL metadata. लिख के हो गया सबका ETL metadata? Yes, sir. हाँ, what is ETL metadata? Sir, loading cycles. या extraction cycles. Loading cycles कहाँ बोला मैंने? Extraction cycles. Loading का क्या बोला आपने? Loading methods, etc. Thank you, sir. या ओके तो हमने बात की थी यहाँ पे डेटा स्टेजिंग में डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर लोड करते हैं। कौन सा डेटा कितनी बार एक्सट्रैक्ट करना है, कौन सी मेथड से एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद स्टेजिंग एरिया में कहां पे स्टोर करना है, उसके ऊपर कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है, और फाइनली उसको डेटा वेयरहाउस में कहां पे लोड करना है, कौन सी मेथड से लोड करना है, वो सब भी तो इंफॉर्मेशन लगेगा, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड मेटा डेटा अबाउट ETL प्रोसेस। पूरा ETL प्रोसेस कैसे रन होगा, कौन सा डेटा कितनी बार एक्सट्रैक्ट होगा, दैट इज एक्सट्रैक्शन साइकिल, कौन सी मेथड से एक्सट्रैक्ट होगा, उसके ऊपर कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस लगेंगे, और कौन से लोडिंग मेथड से वो डेटा वेयरहाउस में कहां पे स्टोर होगा, वो पूरा इंफॉर्मेशन ETL मेटाडेटा में होता है, बराबर। क्लियर about ETL metadata? Yes, right? sir. And the third one is called end user metadata. End user metadata. It is metadata provided to end users. It is metadata provided to end users for easy and efficient access of the data. It is metadata provided to end users for easy and efficient access of data. Okay? तो यहाँ पे जो यूजर्स है, लास्ट में, ये यूजर्स को डेटा इजीली मिल जाए,
कौन सी फॉर्मेट में मिलना चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन यूजर को भी देंगे हम यहाँ पे। ओके, दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। अगर डेटाबेस सिस्टम में आप देखोगे तो एंड यूजर को कभी भी मेटा डेटा नहीं मिलेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? अगर डेटाबेस सिस्टम देखोगे तो एंड यूजर जो है उसको मेटा डेटा कभी भी नहीं मिलेगा, उसको कभी भी नहीं समझेगा कितना टेबल है, कौन से टेबल में कौन सा डेटा है, कहाँ पे प्राइमरी की है, वो सब एंड यूजर को कुछ नहीं पता चलेगा। बट यहाँ पे part of metadata is made available to end users so that they can access this data easily and efficiently, because ये थोड़ा complicated होता है यहाँ पे, that's why. So it is called end user metadata. ठीक है? Clear? Is this point clear? Yes, sir. End user metadata? Fine. और last में sixth component है control and management component. Control and management component. ओके, ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया कि डेटा सोर्स है, वहां से डेटा निकालना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लोडिंग करना है, फिर यहाँ से ईडीडब्ल्यू से डेटा उठा के डेटा मार्ट में डालना है, डेटा मार्ट से वो डेटा जाएगा पर्टिकुलर सिस्टम को। ये जो सारे फंक्शंस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। So we require some control and management component. Okay, so it is responsible for all the processes within data warehouse. It is responsible for all the processes of data warehouse and interaction between data warehouse components The source of information for control component is metadata. Source of information for control component is metadata. Okay, fine. So control component क्या होता है? It will control all the processes within the data warehouse. ETL process, information delivery process, okay, transferring data from EDW to data mart, वो सारा जो कंट्रोल है that is control and management component का responsibility. बराबर? अभी कंट्रोल कंपोनेंट को कैसे समझेगा कि पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन सही हो रहा है कि नहीं? Try to understand. आपने लास्ट में क्या लिखा? Source of information for control component is metadata. What does that mean? Consider particular extraction चालू हुआ, कोई डेटा एक्सट्रैक्शन चालू हुआ, वो एक्सट्रैक्शन सही है कि नहीं है, कंट्रोल कंपोनेंट को कैसे समझेगा? It will look into metadata. If this extraction is happening according to metadata, then it is correct. Otherwise, it will invalid. Okay, clear? So that is the responsibility of control and management component to see whether all the processes are going on properly or not. पूरा जो इंटर प्रोसेस लाइक कम्युनिकेशन है, डेटा सोर्स में से स्टेजिंग में गया, स्टेजिंग में से स्टोरेज में गया, स्टोरेज में ईडीडब्ल्यू में से डेटा मार्ट में गया, फिर इंफॉर्मेशन डिलीवरी हुआ, ये जो सारा प्रोसेस है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंपोनेंट. ठीक है, समझा पूरा? ओके, Yes, sir. ओके. So I can divide it into 3 levels like this. Okay, how I will draw. Level 1 is like this. This is level 1. Okay, level 2 बहुत बड़ा है. This is entirely in level 2. Okay, और level 3 में आता है data mart and information delivery. Okay, so this is 3 level architecture. Level 1 consists of all possible data sources. Level 2 staging area and storage area, जहां पे डेटा टेम्पररीली स्टोर होकर प्री प्रोसेस होता है.
और डेटा परमानेंटली स्टोर होता है स्टोरेज एरिया में. एंड लेवल 3 is about accessing data either via data mart or directly from EDW using information delivery. Okay, so this is 3-level data warehouse architecture. समझा पूरा आर्किटेक्चर, सारे कंपोनेंट, उनके फंक्शंस. Is it clear to you? Yes. अभी ये डायग्राम मैंने जो ड्रॉ किया है उसको देख के आप ड्रॉ कर पाओगे कि नहीं? अभी तक आपने पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा, बराबर? सबका डिस्क्रिप्शन लिख के हो गया, सिस्टम का आर्किटेक्चर पूरा? Yes. राइट. तो ये, हाँ, ये आपका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है उसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करना है तो ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा. बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन? मैंने जो ड्रॉ किया है वो समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ रहे हैं. ओके, सो क्विकली इन 5 मिनट्स ड्रॉ कर लो पूरा. In exam also we have to draw this exactly like this. ऑब्वियसली आर्किटेक्चर तो अच्छे से ही ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पे मेरे पास ये टैबलेट है इसलिए लाइक आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ नाइसली. Okay, now frankly tell me, have you understood the concept, basic concept समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good, very good. तो ये आज के टॉपिक जो हमने डिस्कस किए उसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑपरेशनल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो आ सकता है. और डेटा वेयरहाउस सिस्टम आर्किटेक्चर आ सकता है. और बाकी का जो हमने डिस्कस सारा किया दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. वो वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक डेटा मार्ट क्या होता है बताओ. ओके, और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज. Yes, sir. ओके, हो गया ड्रॉ? ओके, व्हाई आई एम हरिंग इज लाइक लेक्चर थोड़ा डिले हो गया अभी, मतलब एक्सटेंड हो गया ना. Sir, we have taken the screenshot. ओके, देन टेल मी ना. ओके, तो फिर अच्छे से अपने हाथ से ड्रॉ करो अपनी कॉपी में. स्क्रीनशॉट ले लिया तो अच्छा है. एवरीवन इज डन? No, sir. I will suggest you also take a peek. ओके, पिक ले लो और फिर अपनी कॉपी में अच्छे से ड्रॉ करो क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है. Done. Okay, so everyone is done with the diagram, either pick. Okay, हो गया सबका? Yes, कोई भी sir. बाकी नहीं है ना? Okay, very good. So okay, fine. Today we will stop here. आज हमने देखा डेटा वेयरहाउस सिस्टम आर्किटेक्चर तक. Okay, so next time we will talk about top down, bottom up design and hybrid design of data warehouse architecture. And then we will talk about multi-dimensional data model and star schema, snowflake schema, वो सब discuss होगा. Okay, fine. So the next lecture is also like every lecture is obviously important, but उसमें important concept है जो थोड़ा difficult है understand करने का, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, fine. So today we stop here.